So, first of all, good morning. गुड मॉर्निंग. अभी पिछला क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसुलेशन, है ना? वेरी गुड. सो basically what we were trying to understand was, first thing, we understood the structure of the atmosphere. First composition, then structure. After that we came to heating of the atmosphere. ठीक है? And in heating of the atmosphere we understood that the earth gets heated mainly due to the heat that it receives from the sun, and the heat that it receives from the sun is called as insolation, and we get around 2 billionth part if you divide the total heat released by the, or total radiation released by the sun, if you divide that into billion parts, then we receive 2 parts. ठीक है? That we call as 2 Langlays or 1.94 calories per centimeter square per minute. ठीक है? इतना हमको एनर्जी मिलता है सन से, वेयर on top of the atmosphere, right? And that is nearly uniform. ठीक है ना? Then we saw that when you go beyond, so when you get into the Earth's atmosphere, and how much heat do we receive at the surface of the Earth, right? Surface of the Earth. ठीक है? So surface of the Earth पे we saw that because of various factors, the heat received at different places is different. And then we saw which are the factors which affect the heat received at different places, है ना? So which factors were there? सबसे पहला हमने देखा the shape of the earth, then the tilt of the earth, shape of the earth, what else? Rotation of the earth, revolution of the earth, other factors was, है ना? देखा हमने. ठीक है? So lot of factors we saw with respect to which affect the insolation received. Now what is the final outcome? Now these are the factors which affect the insolation, but then finally we have to see ki how much insolation then we receive, right? So because of all these factors, the insolation received at different places is different. ठीक है? So I think, did we write that last line? No. ये लिखा हमने जो अभी मैंने बोला, because वो भी लिख लो. I think that's the last thing that you needed to write there. That because of these various factors, the insolation received over the surface of the earth, because of these various factors, the insolation received over the surface of the earth at different places is different, which causes different heating, of various regions, different level of heating, which causes different level of heating of different regions. Okay. So how much heat or what different level of heating takes place? Let us see. For example, if this is the surface of the earth, and let us say this is 0 degree, this is 23.5 degree. Please do draw with me. And this is 90 degree latitude. ठीक है? ऐसा करके. Then the pole, 90 degree latitude, which is the pole, receives around 70 watt of energy per meter square. The polar region receives this much energy from the sun, 70 watts approximately per meter square. ठीक है? That's the average that it gets. Whereas the tropical region receives up to 320 watts per meter square. ठीक है? So tropical में we get up to 320, and in the polar region we get as less as around
70 centimeter, and the equatorial region receives less than 320, right, which means it does not get as much as the tropical region, so it gets slightly less. The equatorial region gets lesser. So which region gets maximum? The tropical region, right? Why? Because normally the rains there are less and the sky is clear. Okay, so we have to write that if you feel like that this is mainly because there are lesser rains in tropical region and hence the sky is relatively more clear. So insolation is able to pass through. Clouds नहीं होता है वहाँ पे. ठीक है, equatorial region have clouds. Why they have clouds and why this region has clear sky we'll talk. वो आएगा अभी. ठीक है, but just the logic you should know. So now this is one part. So this is the latitudinal distribution of insolation. The second, generally regions having cloud and dust, would have what? More or less? Less intensity. Having cloud and dust would have generally less intensity. Next, at the same latitude, if you take the same latitude, between continental and oceanic regions, at the same latitude, if you consider the continental region and the oceanic region, where should we expect more clouds? Oceans. And because of that, where should we expect more sunlight? Continent. So this is the point you have to write. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Between the oceanic and the continental region, the oceans have more clouds. Hence continents have more sunlight or insolation. ठीक है? Because the oceans have more sunlight, therefore the continents have more. Sorry, मैंने शायद उल्टा बोल दिया. Because the oceans have more clouds, therefore the continents will receive more sunlight because cloud cover कम होगा. ठीक है? So clear sky. ठीक है? Okay. So these are some broad things that you need to remember in terms of insolation, right? Good. Now, how does the, so this is the insolation that we receive. Now, insolation मिल तो गया, but heat कैसे होता है atmosphere? ठीक है, you are getting insolation. Insolation is something like you can say gas supply in your pipeline. ठीक है, जैसा आपका गैस सप्लाई आता है पाइपलाइन में, इंसुलेशन वैसा है, उतना हमको एनर्जी आ रहा है. बट हाउ डज द फूड गेट हीटेड? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हीटिंग कैसे हो रहा है ना? सो हाउ डज द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड, राइट? एंड विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वी मोर इंटरेस्टेड इन? आर वी इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर? वो सब तो हम कर चुके हैं. हाउ डज द थर्मोस्फेयर गेट हीटेड इफ आई आस्क यू? क्या आंसर है? Because of less particle and direct ionization. ठीक है? How does the what you call as the stratosphere top, why does that remain relatively more hotter than the lower part? UV radiation. तो वो तो हमें पता है. But where do we exist? हम कहाँ रहते हैं? We live in the troposphere and that too at the bottom of the troposphere. है ना? तो हमें तो ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि how does the bottom of the troposphere get heated? ठीक है? So let's understand how does the atmosphere within bracket lower part of the atmosphere gets heated. ठीक है? How does the atmosphere or within bracket lower part of the atmosphere? How does the atmosphere gets heated? And when we say atmosphere, here we mean the the troposphere's lower part. ठीक है? Troposphere's lower part. Okay, very good. Now, one thing that we need to understand here is that the radiation that comes from the sun, ठीक है? मतलब gradually as we proceed, I'll tell you that it does not heat up the atmosphere directly. ठीक है? The heat coming from the sun does not heat up
atmosphere directly, because you have to understand how does anything gets heated. How does anything gets heated? For getting heated, a particle has to absorb energy. When it will absorb energy, particle मतलब matter, gas, तो atmosphere किसका बना हुआ है? Gas का, particles का. So those particles have to absorb energy, है ना? Now when those particles have to absorb energy, they should have the capacity to hold that. Okay, and which type of energy does the particle in the air will hold? This is something that we have to understand here. Okay, so the energy which is coming from the sun in the form of insolation is a high energy. What kind of energy it is? It is high energy, and because of that it does not affect, or it is not the capacity of the atmospheric particles is not there to absorb that heat. वो इतना तेज है and high energy है that तेज would be a wrong word because all the radiations have the same speed, but it is such a high energy thing that the particles in the atmosphere are not able to hold it. Is that okay? It is something like saying that, can you destroy the dust particles by shooting a bullet into them? Okay, you can destroy a man, right, or a wall or something hard, but you can't destroy the air by shooting bullets. है ना, air तो बस side में निकल जाएगा. I hope you understand. So same ways, the sun's insolation which are coming, they are not absorbed by the atmosphere. In very simple language, if I have to make you understand, this is the thing, that the atmosphere is not able to absorb the heat coming from the sun. It is something like if you I'll give you another example. For example, you have these strainers. Strainer समझते हो ना, चाय छन्नी, है ना, घर पे सबका घर पे एक वो strainer होता है. इंग्लिश का वर्ड है strainer, हिंदी में हम चाय छन्नी बोलते हैं. ठीक है. So if you take a strainer and if you try to pour that tea mix in the morning, जब आप डालते हैं उसमें, what does the strainer hold? Does it hold the tea also? Why? Because the tea is so fine that it is able to pass through. And what does the strainer hold? Only the tea leaves. The tea leaves are held by the strainer. Why? Because they are big enough. Is that okay? So same ways, the atmosphere, if you imagine like a strainer, okay, what is the atmosphere able to not hold? The insolation, right? The incoming solar radiation passes through it, so it does not hold it. Now when that heat passes the whole atmosphere, which region will it reach? It will reach the surface of the earth, and the surface of the earth absorbs it. Okay, so the insolation directly does not heat the atmosphere, it directly heats the surface of the earth. Land, water, वो सब गर्म कर देता है वो, लेकिन वो atmosphere नहीं करता. And this is a good thing for us, because if the atmosphere was about to absorb all the heat, then no heat will reach you. है ना, आप तक तो हीट पहुंचता ही नहीं, तो हमें कहां पे रहना पड़ता? है ना, कितना डिफिकल्ट है सोचो. हमेशा उड़ते रहना पड़ता, नीचे आते तो ठंडे हो जाते, है ना. I hope you can imagine this, right? So this is how nature has evolved, right? That the atmosphere is such that it is not able to absorb the heat. All the heat passes through the atmosphere and reaches the surface of the earth, and then it is absorbed by the surface of the earth. So in this process, what is getting heated up? The surface of the earth gets heated up. Now the second character, I think I said at some point in your class that irrespective of its temperature, every surface releases heat. कुछ ऐसा बोला है आपका क्लास में कभी, याद है ना? Irrespective, in this whole universe there is nothing that does not release heat. The whole universe average temperature is around minus 270 Kelvin. ठीक है, sorry, extremely, just a second, sorry, minus 270 degrees Celsius, not Kelvin. Kelvin was zero around है, which is nearly as cold as the absolute zero temperature. Absolute zero temperature होता है वो 0 Kelvin होता है, which is minus 273.15 degree Celsius. ठीक है, तो वो absolute सबसे ठंडा, the most coldest temperature that you can ever achieve is minus 273.15. उससे ठंडा ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, because that is absolute zero. Is that okay? And universe का average temperature कितना है? Minus 270, just 3 degrees warmer than
absolute zero. But even at that temperature, every object in the universe tends to release energy. ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं. ठीक. So will the Earth's surface also release energy? It will. ठीक है. That's how the sun was releasing energy. Sun भी तो energy release कर रहा है. Earth surface भी energy release करता है. But how much energy will the Earth surface release? Equal to sun? No. The energy released by the Earth will be much less than the energy released by. Why? Because Earth's own energy is less. Sun का energy बहुत ज्यादा है ना? And Earth's energy is less. So this energy release is in proportion to the self temperature. Whatever is the temperature of the body, according to that, the body releases energy. Is that okay? And lower the body's temperature, lower level of energy it will release. ठीक है? So if the energy is slow, now if I tell you, I shoot a bullet and I throw a ball, which one is easier to catch for you? You understand? है ना? Until unless you are Superman type, है ना? कि भैया हम तो सर बुलेट भी शूट करो, कैच करके दिखाते हैं. रजनीकांत एंड सुपरमैन, वही दो लोग कर सकते हैं, और कोई शायद. और धर्मेंद्र भी. अच्छा, वो भी कैच किया हुआ है. ठीक है, ठीक है. ये तीन लोग अभी. अब इसका आगे और किसी का नाम नहीं लेना है. ठीक है, तो ये दो तीन लोग ही हैं पूरा धरती पे who can catch a bullet. Otherwise normally you can't. Why? Because it is high energy. ठीक है. So just understand this simple way that Earth releases energy. One, it releases energy at low energy level. Because of that less energy that the Earth releases, now the atmosphere is able to hold it. The particles in the atmosphere are able to absorb that energy क्योंकि वो low energy है. Is that okay? And the difference is like that bullet and ball. High energy one goes fast, नहीं पकड़ पाते हैं. Low energy one, the particles in the atmosphere are able to hold. Now, which particles in the atmosphere are able to hold them? Collectively, we call that group of particles as something. उनको हम कुछ बोलते हैं greenhouse gases. So, atmosphere में the greenhouse gases are able to absorb the heat released by Earth's surface. Is that okay? So, if the heat is being released from the Earth's surface, then which region of the atmosphere will get heated more? Where is the heat coming from? It is like अगर आप गैस बर्नर के ऊपर खाना रखेंगे या पानी रखेंगे तो which region of the water will get heated first? The bottom. So same way in atmosphere also, the lower part of the atmosphere gets heated first and most. And as you go higher, the temperature goes on decreasing. This is your normal lapse rate. जो आपने पहले लिखा है, troposphere में होता है ना, we have a normal lapse rate. This is the normal lapse rate. Is that okay? So if I ask you, how does the radiation heat up the atmosphere? What is the answer? Insolation mostly does not heat up the atmosphere. What heats up the atmosphere? Earth's radiation. उसके लिए एक word है, terrestrial radiation. So only terrestrial radiation heats up the atmosphere. Why? Because it is like less energy, which the atmosphere is able to catch. ठीक है? And the high energy insolation atmosphere is not able to catch. Okay, clear? So radiation part समझ में आया? ठीक है? So very good. So suppose this is your troposphere. ऐसा diagram बनाएंगे हम because we are troposphere, because we are interested in troposphere heating only. उसके ऊपर का heating we won't talk of. All right. Though this radiation goes on heating as it keeps going up and up, it goes on heating the upper parts also. वो जो terrestrial radiation है. But obviously it will heat up maximum at the troposphere and gradually as you go higher it will heat up less. ठीक है? So even in the stratosphere it is heating, even in the mesosphere it is heating. आपने पढ़ा होगा mesosphere में what is the character of temperature? Mesosphere. As you go higher the temperature decreases. वो क्यों decrease हो रहा है? Because lower part is getting heated by terrestrial radiation, but as you go higher in the mesosphere the heating is less. और वहां और कोई factor है नहीं. In mesosphere there was no other factor. In thermosphere we had very less particle. तो वहां तो हो रहा था. Stratosphere also we have UV radiation, but in mesosphere there was nothing. So only the terrestrial radiation is heating up the mesosphere. Is that okay? ठीक है? So now when you talk of heating, how does the atmosphere gets heated? Now though you have drawn this diagram, but I would like you to note this down. Types of heating.
टाइप्स ऑफ हीटिंग. राइट नाउ दिस इज बेसिकली फिजिक्स, स्लाइट फिजिक्स है ये, ठीक है, बट घबराना नहीं है. फिजिक्स है तो कुछ नहीं हुआ, फिजिक्स भी नेचर में ही है. वो बुक से बाहर निकालोगे तो अपने आप इजी हो जाता है. जब तक बुक में रखते हैं तब तक फिजिक्स मुश्किल है. ठीक, जैसा ही नेचर में लाओगे सब समझ में आने लगता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी वेज हैव यू सीन समथिंग गेटिंग हीटेड एट योर होम? घर के ऊपर किचन के अंदर आपने बहुत टाइप का हीटिंग देखा होगा ना. जैसा आपका एक माइक्रोवेव हीटिंग है ना, वो कैसा हीटिंग है? वो रेडिएशन हीटिंग है ना. माइक्रोवेव के अंदर आप रख देते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन खाने के ऊपर जाता है, उसको वाइब्रेट करता है और वो हीटअप हो जाता है ना. तो पार्टिकल में हीट डायरेक्टली नहीं जा रही है, वो पार्टिकल अपना हीट खुद जनरेट करता है. किसका वजह से? रेडिएशन का वजह से. रेडिएशन जाके पार्टिकल को स्मॉलर लेवल पे जाके उसको वाइब्रेट कर देता है. इसीलिए आप देखो वो खाना बाहर से ठंडा होता है, अंदर गर्म हो जाता है. इफ यू कुक समथिंग इन माइक्रोवेव फॉर लॉन्ग, जैसा आप बाहर, अच्छा ठीक, ये तो आप भी करते होगा, यू गो टू द शॉप्स एंड यू बाई पैटीज और समथिंग, है ना, और उनसे बोलते हो गर्म करके दो, तो ऊपर का लेयर तब भी थोड़ा ठंडा होता है, अंदर वाला पार्ट हो जाता है. कभी कभी उल्टा भी होता है, अगर वो कम देर के लिए करेगा तो बाहर का ही गर्म रहेगा, अंदर ठंडा. लेकिन अगर ज्यादा कर देगा तो अंदर का ज्यादा गर्म हो जाता है, बाहर का. तो इसीलिए आप उसको बोलते हो भैया थोड़ा कम गर्म करना, है ना. मैं तो उसको बोल देता हूं जब भी मैं कभी कुछ उल्टा पुल्टा बाहर खाता हूं, तो आई हैव टू टेल ओके कि थोड़ा गर्म गर्म करिए, नहीं तो वो बिल्कुल मतलब मुंह में डालो, बाइट मारो और दांत तक जल जाते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई डज दिस हैपन. अगर वो एक्सटर्नल हीटिंग होता आग के ऊपर तो बाहर का लेयर ज्यादा हीट होना चाहिए, बट यहां होता क्या है कि दोस पार्टिकल्स आर हीटेड इन द, एवरी पार्टिकल इन दैट फूड इज हीटेड अप. एक्सटर्नल पार्टिकल इज इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, तो वो ठंडा भी होता रहता है, अंदर वाला कॉन्टैक्ट में नहीं होता और वो सिर्फ हीट हो रहा होता है. सो इट डजंट कूल डाउन. डू वी गेट इट? सो दिस इज रेडिएशन हीटिंग. ठीक, तो एक टाइप का हीटिंग हो गया रेडिएशन हीटिंग. हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूं. व्हाट? नहीं आएंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लास के बाद में या ब्रेक में पूछो. सबको नहीं परेशान करना है, ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स है यार, क्यों सबको क्यों परेशान करे. सिंपल लाइफ रखते हैं, है ना. सिंपल लाइफ क्या है? आप सबका यूपीएससी का पर्पस के लिए कुछ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, ठीक है. और सब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्स में सब कुछ हीट. अच्छा ठीक है, तो अभी देखते हैं, आ जाओ ना, देखते हैं, है ना. राइट, इट इज नॉट दैट टेम्परेचर बिलो जीरो इज नॉट अचीवेबल, बट इट इज अचीवेबल इन वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस. वो फिजिक्स के अंदर फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें. हाँ जी बोलो बोलो, लिस्निंग. विच टाइप ऑफ एनर्जी डज द अर्थ हैव अपार्ट फ्रॉम सन्स रेडिएशन? ठीक है, आप खुद सोचो, 4.6 बिलियन ईयर पहले अर्थ का क्या स्टेटस था? बॉइलिंग अंडा, है ना. और धीरे धीरे क्या हो गया? बॉइलिंग अंडा बाहर निकाल के रख दिया, तो ऊपर का लेयर तो ठंडा हो गया है, द टॉप लेयर इज कूल्ड, हीट है अंदर, है ना. तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थ्स इंटरनल हीट एनर्जी. ठीक है, अब वो इंटरनल हीट एनर्जी का कॉज क्या क्या है? हाँ, बैकरेल से लेकर के मेरी क्यूरी सबने समझाया है ना. रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव मटीरियल इनसाइड द अर्थ. ठीक है, तो ब्रॉडली क्लियर है. आगे बढ़े, कुछ और डाउट है? आंख में तो दिख रहा है. सर आप आंखें क्यों पढ़ने लग जाते हो? सर का काम है पढ़ना यार, है ना. राइट, सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स टू रीड आर ह्यूमन बींग्स. ओके. तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. बट ऐसा नहीं कि कल से सब छोड़ छाड़ करके ह्यूमन बींग पढ़ना शुरू कर दो. ओके. Okay. So, yes, coming back. So one is radiation, the other is, I need the answers. तो जल्दी जल्दी बोलो. Which are the different other methods of heating? One is radiation. तो वो हो गया माइक्रोवेव. अब दूसरा चीज बताओ. When you put the fire on that top of that तवा. अच्छा, fire on top of तवा नहीं, उल्टा बोल दिया. तवा on top of fire. ठीक है. तो what do you get? What kind of heating is that? Convection या conduction? Convection या conduction? कन्वेक्शन, कंडक्शन. उसमें सॉलिड कौन कौन सा है? कंडक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाट? कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन
सॉलिड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड। तो फायर क्या है? आपने फायर के ऊपर रखा था ना तवा, तो मजेदार है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशंस आप कितना क्लोजली कर रहे हो, दैट विल गिव यू द आंसर। अच्छा, फायर कितनों ने सॉलिड और लिक्विड का जैसा होल्ड किया हुआ है हाथ में? किया है? फायर, व्हाट स्टेट इज फायर इन? gaseous, है ना? Fire is a chemical reaction of the particles in the gaseous form which releases energy. Light भी रिलीज करता है, वो इतना हीट अप हो जाता है, लेकिन वो है क्या? गैस है। तो गैस के अंदर होता है कंडक्शन। हाँ, पढ़ो, खुद ढूंढो यार, मैं क्यों बताऊं, ये तो फिजिक्स है। ठीक है, तो चलो वो छोड़ा। अच्छा, तवा के ऊपर यू पुट दैट रोटी, नाउ व्हाट हीटिंग इज दिस? दिस इज कंडक्शन। ठीक है, सो कंडक्शन इज व्हेन यू पुट सॉलिड और लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, कॉन्टैक्ट होना चाहिए तब है, राइट? सो इन द एटमोस्फेयर वेयर विल वी गेट कंडक्शन, वो अभी देखते हैं। बट another way of heating is conduction, where a solid liquid comes in contact with another solid liquid, then you get conduction. ठीक है, convection क्या है? convection takes place in gases only, liquid में नहीं है। देखो, आप लोग बोले जा रहे हो, मैं लिखे जा रहा हूं, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं कि राइट है रॉन्ग है, आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा। क्या है convection takes place? Convection takes place because of the particles go into motion, right? And those moving particles go on to transfer the heat. Conduction में movement नहीं होता है, सिर्फ vibration होता है, right? They go hit and because of those numerous hitting, they go on to heat up. This is conduction. Convection में क्या है? The particles are so mobile that they move, right? And they move to a region where they can easily. So this is convection. So convection takes place in gas, it also takes place in liquid. ठीक है, बट यहां पे होता क्या है? That first that it will absorb the heat at one place and then it will rise and go on and pass the heat somewhere else. ठीक है, उसका सबसे इजी एग्जांपल है कन्वेक्शन का, पुटिंग योर हैंड अबव अ फ्लेम। ठीक है, आप आग पे हाथ मत रखो, आग का ऊपर रखो, थोड़ा ऊपर। Your hand still feels the heat. Why? This is convection. Why? Because the air gets heated by the fire and that heated air rises up and touches your hand. So that heated air rising and touching your hand is like convection. Is that okay? Same happens in water also. The upper part of the water in that container is not in contact with fire or the bottom of the container. ठीक है, but the liquid from below rises, goes up and heats up the surrounding liquid. ठीक है, so the third one is convection, right? Where rising convections transfer the heat. Where rising convection transfer the heat. Okay, so this is convectional and that takes place in magma also and it also takes place in atmosphere, gases, पानी, सब में होता है ये. Is that okay? So convection is clear? Yes or no? So when that liquid particle is in contact with the bottom surface of the plate and then it is getting the heat directly from the plate, what heating is that? That is conduction. But when the moment that liquid particle rises, it starts convection. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? तीन टाइप। एटमॉस्फेयर में एक और टाइप का हीटिंग होता है, वी कॉल इट एज एडवेक्शन। व्हाट इज एडवेक्शन? हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर। ठीक है, सो द एयर विल गेट हीटेड and then it will horizontally move to surrounding region. It will not rise vertically, it will move horizontally. So when the air moves horizontally and passes the heat, you call it as advection. ये कैसा है? It is something like when you are sitting around a flame, फायर जला के, जैसे आप लोग कहते हैं ना, या एक कैंडल है उसका साइड में हाथ ले जाओ, साइड में भी थोड़ा सा हीटअप होगा, उतना नहीं होगा बट थोड़ा होगा। Yes or no? So that is like advection because most of the convection is upward. Slight advection is to the side also. Is that okay? So sideward heat transfer is advection. Clear?
So advection. So चार तरीका से heating होता है, 4 ways. Now we have to see in how many ways the atmosphere gets heated. So in when you see the atmosphere, something like this, the whole atmosphere and the surface of Earth and tropopause, right? So when you see this, all this region, the surface of the Earth can have two types of temperature. It can either be warm or it can be cold. तो दो टाइप का रीजन्स हो सकता है, वार्म रीजन्स एंड कोल्ड रीजन्स. ठीक है. एंड देन देयर इज अ लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड देयर इज द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. इतना ही है. ठीक है. नाउ सो इफ यू identify different regions of the atmosphere, one region is this, suppose the air which is just above the warm land. एक एयर ये है ना रीजन ऐसा. So the air which is just above the warmer land, as you can see, warmer land लिखा है यहाँ पे, warm लिखा है, दिख रहा होगा. All of you could see. So this region, ये वाला warm land का ऊपर, and the other side is cold land. ठीक है. So suppose that is the polar region and this is the equatorial tropical region. So how does the air which is above the surface in the hotter region, tropical equatorial region, how does that air get heated? Conduction. Right. So this will broadly get heated by conduction, broadly, and then some convection. So this is conduction heating, and conduction heating of the atmosphere happens by air directly in touch with ground. The air which is directly in touch with ground will get heated by conduction. Is that okay? Now when this air will rise up, vertically up, and go to the upper part of the atmosphere, will it heat up the upper part? Yes. So what type of heating will this be? This is convection. So in the hot regions on the ground, rising air heating up the upper atmosphere is by convection. ठीक है. So this is convectional heat. Okay. So the hot air will rise up and then it will pass the heat to surrounding. This is convection. Okay. Convection. Now the third, how will radiation heat up? Radiation will heat up in all regions. वो तो पूरा atmosphere को करेगा from bottom to top. And I told you in all regions you have radiation irrespective of the temperature, है ना? So in every region you will have radiation. So radiation will heat the earth atmosphere in all regions. So whole of atmosphere gets terrestrial radiation heat. ठीक है. In hotter region it will receive more heat, in colder region it will receive less heat, but it will receive heat. ठीक है. So radiation is the third one. So first was conduction, the second was convection, and third is radiation. So radiation will heat in all regions. And how will the colder region air get heated up? ये वाला air कैसा heat up होगा? This is advection. This air will get heated by advection. When the warm air from the hotter regions will come to the colder regions, they will heat up the colder region lower surface air. ठीक है. So ये heating हो गया advection. ठीक है. Now is there any region of the atmosphere which is left? बोर्ड पे देखो. Hot region surface heated, hot upper region heated, cold surface region heated, and cold upper region, is it heated or not? Diagram में by radiation. Good enough. That's it. उसी से होता है वो, और किसी से नहीं होता. That's why that region is relatively cold. हर जगह equal temperature तो होता नहीं है atmosphere में. Different regions have different temperature because of different types of heating. Is that okay? But whole of the atmosphere is heated. Is this clear? And this is how these four processes heat up the different regions. Clear? आगे बढ़े? Right? So and which radiation heats up the earth? वो terrestrial radiation लिखना है, not insolation. Insolation does not heat up the atmosphere much. Most heating is terrestrial radiation. तो लिख लेना है. The radiation is terrestrial radiation. ठीक है? Terrestrial radiation.
ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, नॉट द इंसोलेशन, राइट? व्हाई? बिकॉज इंसोलेशन इज हायर एनर्जी, इट इज लाइक बुलेट, right? And terrestrial radiation is lower energy, it is like a ball, so catching the ball is easier, so atmosphere catches the lower energy. ठीक है? Is this all right? Now you also have to remember one more thing with respect to this long wave, short wave, है ना? वो आता है, और ये wavelength और frequency हम में से बहुतों को परेशान करते हैं, ठीक है? So for explanation I have found a simple way which will be easy for you to remember. क्या तरीका है? Now tell me, if I ask you in simple language, because of frequency word बार बार आता है, but what is frequency? If you think frequency is nothing but vibration, number of vibrations per second, है ना? तो frequency याद नहीं रखना है हमें, हमको याद रखना है vibration, because frequency is nothing but how many times something is vibrating, है ना? या how many time it is repeating itself. जैसे आप बोलते हो ना मेट्रो पे, यार ये मेट्रो का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोई वेव तो है नहीं, बट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ है कि हाउ फ्रीक्वेंटली विल द मेट्रो कम, ये सुना है, ऐसा बोलते हैं ना, राइट? कि उसका फ्रीक्वेंसी, या आपका क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्लास का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वो रेडियो चैनल तो पूछ नहीं रहे क्लास का, पर कितना बार आपका क्लास होता है. सो वेरी सिंपली सेड, हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी, इफ यू हैव टू एनर्जीज, इन विच केस वाइब्रेशन विल बी मोर, हाई एनर्जी विल गिव यू मोर वाइब्रेशन, सो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होना चाहिए, ऐसा याद रखना है. बिकॉज इफ यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी, तो वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका हाई था किसका लो था. तो याद कैसा रखना है, एनर्जी के सेंस में और वाइब्रेशन, ठीक है? सो हाई एनर्जी रेडिएशन विच मीन्स इंसोलेशन विल हैव हायर एनर्जी, सो हायर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सो फ्रीक्वेंसी विल बी मोर, ठीक है? सो इंसोलेशन हैज हाई फ्रीक्वेंसी and earth's radiation lower energy, so vibration will be less, है ना? the particle vibration will be less, so उसका frequency कितना होगा, less. So terrestrial radiation has less frequency, ठीक है? So insolation because of high energy, high vibration, therefore high frequency. ऐसा चाहो तो लिख लो ताकि आपको याद रहे. What do we write? Insolation due to high energy, higher number of vibrations, high energy, therefore higher number of vibration, therefore higher energy, therefore higher number of vibrations, therefore higher frequency. And terrestrial radiation, lower energy, therefore lower number of vibrations, and therefore lower frequency. ठीक है? I'm more so right now saying this for the people who have not done science for long time. ठीक है? क्योंकि वो frequency, vibration ये सब थोड़ा सा ना हमें confuse कर देता है, right? So at least the ones who have not done science for long, at least they should write this. Higher energy, so terrestrial radiation has lower energy, therefore lower number of vibration, therefore lower frequency. Now what is wavelength? Wavelength क्या होता है? Wavelength is the distance between the vibrations. ठीक है? इतना ही है. It is the distance between vibrations. Wavelength. So if the frequency is more, vibration is more, distance will be less. है ना? ऐसा देखो. If I ask you in this diagram, ऐसा मैं बना रहा हूं. This is high frequency और हायर वाइब्रेशन, दिस इज लेस फ्रीक्वेंसी, लेसर वाइब्रेशन. तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा है? हाँ, मोर फ्रीक्वेंसी हैज लेसर डिस्टेंस बिटवीन देम. ये वेवलेंथ यही होता है. वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर लेवल्स, सिंपल भाषा में, ठीक है? उसको बहुत ज्यादा साइंस नहीं बनाना है. सो वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर लेवल्स. सबसे पहले तो ये लिख लो, द वंस हु डोंट नो. सिंपली वेवलेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर लेवल. सिमिलर लेवल, वहां सिमिलर लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपस में बोलते हैं ना यार उसका वेवलेंथ मुझसे मैच करता है,
तो वेवलेंथ मैच करता है मतलब सिमिलर लेवल पे है, ठीक है. सो वेवलेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर लेवल एंड हेंस हायर फ्रीक्वेंसी विल हैव लेसर वेवलेंथ क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी विल हैव हायर वेवलेंथ, ठीक है. सो this will have lesser wavelength and this will have higher wavelength. So if UPSC asks the atmosphere absorbs higher wavelength energy or lower wavelength energy, वहां हो सकता है आपको टेरेस्ट्रियल और इंसुलेशन देना, वो सिर्फ ये दे देंगे एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स हायर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ एंड हायर वेवलेंथ है ना, और फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी लोअर एंड टेरेस्ट्रियल और सोलर. सब समझ गए. अब आप कोई सा भी फॉर्म में वो दे आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ टेरेस्ट्रियल और ये समझ रहे थे, बट देन दे कैन चेंज द क्वेश्चन एंड आस्क यू इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज. सो नाउ यू कैन ऑल्सो आंसर द. तो अगर वो वेवलेंथ पूछेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल, ये फिर याद करना है एनर्जी, फिर वाइब्रेशन, वहां से कैलकुलेट कर लो. थोड़ा लॉजिक लगाना बस, ठीक है. ऐसा रटना मत, नहीं तो रटोगे तो पक्का एग्जाम में फेल होगे, ठीक है. बिकॉज मेनी ऑफ अस हैव पैथेटिक मेमोरीज एंड अंडर प्रेशर वी हैव मोर पैथेटिक मेमोरी, ठीक है. लेकिन लॉजिक थैंकफुली अंडर प्रेशर भी काम करता है, ठीक है. अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल ही इलॉजिकल डिसीजन ले लो, नहीं तो नॉर्मली लॉजिक वर्क करता है लेकिन मेमोरी नहीं करती है कई बार, ठीक है. दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आवर ब्रेन, है ना. अंडर प्रेशर, द मोर यू पुट प्रेशर ऑन इट द लेस विल बी योर मेमोरी, बट मोर योर लॉजिक्स माइट एंड इंट्यूशंस माइट स्टिल बी इंटैक्ट. तो उस समय पे इंट्यूशन और लॉजिक पे ज्यादा डिपेंड करना है, ठीक है. सो कमिंग बैक, शुड वी कम बैक टू दिस? ऑलराइट. सो नाउ once we understand how the atmosphere is heated, the next thing is, now you understand almost everything, ki which are the factors which are affecting insolation, how much insolation we are getting, and how the different regions of the atmosphere are getting heated. The next thing is now directly coming to how much heat we receive and how much heat we use and how do we use and how much we return, ठीक है. और very simply said, Earth's heat budget, right? So how much we are receiving and how much we are giving back, ये समझ लें अब, ठीक है. So let us come to Earth's heat budget. How many of you generally think you have a not good memory? I need your hands to be raised. और बिना शर्माए करना है यार. How many of you think that you don't have a good memory? And even I am answering to the question. मतलब ये नहीं कि मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं, है ना, मैं सच बता रहा हूं. Since my childhood, the only weakness that I feel I have is having a weak memory because I was interested in less things. Because I told you memory is nothing but interest, है ना. तो मैं बहुत ही कम चीजों में इंटरेस्टेड होता था. मुझे लगता था ये सब बकवास चीजें यार क्यों करनी, ठीक है. नाउ दिस इज again sign of two type of people, dumb and intelligent. Both people have these character. Dumb people समझ में नहीं आता, intelligent people they are selective. कहते हैं जबरदस्ती हर पंगे में हाथ क्यों डालना है, उतना ही पंगे में डालना है. जैसे होता था ना, पेपर आता था एग्जाम में, पता है अगला क्लास में जाने के लिए 40 चाहिए, ठीक है, तो 45 से ऊपर सॉल्व करके एफर्ट क्यों डालना है, 45 तक सॉल्व करो, गुड इनफ. लेकिन कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि उसमें 40 आ जाएंगे, ठीक है. तो जब आपको एक कॉन्फिडेंस होगा तो आप उतना सॉल्व करके आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है यार, टॉप वॉप करने दो जिसको करना है, ठीक है. अनटिल अनलेस यू आर ईगोइस्टिक आल्सो, है ना. और ईगो भी बहुत इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, राइट. तो नॉर्मली आप देखोगे जितने ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो थोड़ा लेजी भी होते हैं, हाईली लेजी. इसीलिए वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि कुछ आराम से रास्ता मिल जाए और हो जाए. ओके, नाउ कमिंग बैक, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू हैव लोअर देन एवरेज लॉजिकल थिंकिंग?
you do not apply logics. How many of you think? Honestly बोलना है. आप खुद देख लो चारों ओर. Do you see the difference? दिख रहा है ना? डिफरेंस दिख रहा है मतलब. एंड दिस इज नॉट, आई एम नॉट पॉइंटिंग दोस 3-4 people. This is what they think, that they is not applying logic, but most of us think that we apply logic. तो हमारा स्ट्रेंथ क्या है दिमाग का? लॉजिक. और वीकनेस क्या है हमारे हिसाब से? मेमोरी. तो हमको ज्यादा क्या यूज करना चाहिए? लॉजिक. हमें ना नॉर्मली अपना लाइफ में लॉजिक्स पे ज्यादा बिहेव मतलब डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर, नहीं, दिस इज ह्यूमन कैरेक्टर, राइट? वी जनरली लैक faith in our memory. It's not memory, it is your faith and trust on your memory. वो हमेशा कम होता है. लेकिन your faith and trust on your logic, irrespective of how poorly it is developed, is always high. So if you work on this strength, what will happen? You will excel. If you work on your weakness, you will come to average. वीकनेस पे वर्क करके आप एक्सेल नहीं करते हो. ठीक है, अगर कोई 100 मीटर भागने वाला है, ठीक है, और वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा, उसको पता है यार मैं बहुत मस्त भागता हूं, और वो सीरियसली अच्छा भागता है, राइट? एंड लेट अस ही अंडरस्टैंड दैट हिज वीकनेस इज मैथ्स एंड ही कीप्स वर्किंग ऑन मैथ्स. ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट हिज स्ट्रेंथ इज रनिंग. तो उसैन बोल्ट तो पैदा ही नहीं होगा, है ना? सबके सब मैथमेटिशियंस बन जाएंगे और वो भी एवरेज अकाउंट्स देख रहे होंगे या मे बी इंजीनियर्स बन जाएंगे. इस सब इंजीनियर ऐसे ही बनते हैं. ठीक है, कोई भी इंजीनियर अपने स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करके नहीं बनता है. वो सिर्फ अपना वीकनेस पे वर्क करके इंजीनियर बनता है. ठीक है, मैथ्स तो अच्छा है तो वो तो हो ही जाएगा. अब केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं और फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं ताकि कम से कम एग्जाम निकल जाए. हमारा टारगेट ही लाइफ में बिल्कुल मिडिल क्लास है. ठीक है, बट यूपीएससी वैसा नहीं है. यूपीएससी मिडिल क्लास टारगेट नहीं है. मतलब है, यूपीएससी भी मिडिल क्लास टारगेट है, दैट्स फाइन, बट वो मिडिल क्लास में हायर एस्पिरेशन है. ठीक है, और ये एग्जाम निकालने के लिए आपको मेमोरी पे तो वर्क करना चाहिए, बट साथ साथ ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं. Right, the more you will depend on your, so the more you will try to figure out logic in things, the better it will be for you to, connect them. क्योंकि logic can help you connect lot many things. क्योंकि logic हमेशा एक A से B पे भागता रहता है और memory हमेशा एक point पे फोकस करता रहता है. नहीं, logic में आप क्या करते हो? A से B पे जाते हो, B के बाद क्या देखते हो? C कहां है, C के बाद D कहां है. मेमोरी में आप ऐसा नहीं करते हो. मेमोरी पे आप एक ही पॉइंट को बार बार फोकस करके रिकॉल करना चाहते हो, और जितना बड़ा पिक्चर आपने याद किया उसमें से आप ये याद करना चाहते हो, अच्छा इस पिक्चर में मैंने क्या क्या देखा था, अच्छा वहां पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ सी था, वहां डी था. लॉजिक में आप ऐसा नहीं चलते हो. लॉजिक में आपको कितना बड़ा भी वो दे दें पजल, आप सारा ड्रॉ कर कर करके आगे बढ़ते रहेगा और उस पूरे पजल को और बड़ा बना दोगे, है ना? तो यूपीएससी बहुत इंटरकनेक्टिंग गेम है. यहां बहुत सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं. तो अगर ये इंटरकनेक्शंस और डेवलप करना है तो अपना लॉजिक्स को स्ट्रेंथन करते रहो. हर चीज में लॉजिकल, और आपको हर चीज में लॉजिक मिलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरा लॉजिकल सा हमारा वो है. इकोनॉमी 100% लॉजिक है, उसका हर डिसीजन लॉजिक है, एटलीस्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्टली लॉजिकल डॉक्यूमेंट है. यू कैन लॉजिकली से कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप उसका लॉजिक समझ लो तो. एंड दैट लॉजिक इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द एस्पिरेशंस दैट वी हैड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, है ना? तो समझ रहे हो, राइट? तो सो एनीवेज, कमिंग बैक, so now we come to the heat budget in the atmosphere. ठीक है, तो हीट बजट पे आ जाएं, टॉपिक पे आ जाते हैं. थोड़ा मोड़ा इधर उधर का बात कर सकते हैं, बट है ना,
बट ओनली टू द एक्सटेंट की हमारे लिए हेल्पफुल हो. जैसे ही वो बकवास हो तो उसके बाद रुक जाना चाहिए, राइट? सो लेट्स कम बैक. हीट बजट. सो व्हेन वी से हीट बजट, व्हाट डू वी बेसिकली मीन? अभी हमें हीट बजट में व्हाट ऑल डू वी नो अबाउट हीट बजट? व्हाट डू यू नो एज ऑफ नाउ? हीट बजट का मतलब क्या है? इकोनॉमी का बजट, घर का बजट, हीट बजट सब एक जैसा है. उस दिन मैंने आपको हीट बजट आपके घर से ही समझाया था ना, ठीक है? तो सारे बजट एक जैसे ही होते हैं. उसका एक लॉजिक होता है. व्हाट इज द लॉजिक ऑफ अ बजट? हाउ मच यू आर गेटिंग, हाउ मच यू आर, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग, एंड देन हाउ मच यू आर गिविंग. फाइनली आपने कितना रिटर्न कर दिया. इज दैट ओके? सो दिस इज द होल लॉजिक इन योर बजट. इज दैट ओके? सो एंड देन यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट. तो अब जब आप इसमें सोचोगे कितना टाइप का बजट हो सकता है, सो देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटी. वन, यू आर टेकिंग मोर. सेकंड, यू आर गिविंग मोर. थर्ड, यू आर equal. Equal on both. Using and taking and giving equal. So if you are not equal, what would happen? You will go on either accumulating or total losing. अब total loss है तो गरीब होते जाओगे, और total इकट्ठा कर रहे हो तो अमीर होते जाओगे. और अगर ना तो इकट्ठा कर रहे हो ना, if you are neither accumulating nor overspending, then you will remain सस्टेनेबल, है ना? तब आप सस्टेनेबल है, मतलब वो सिस्टम चलता रहेगा वैसा. इज दैट ओके? सो अर्थ, व्हाट इज द अर्थ डूइंग? इज इट इन टर्म्स ऑफ हीट, इज इट बिकमिंग रिचर? इज इट बिकमिंग पुअरर? इज इट रिमेनिंग सस्टेनेबल? सस्टेनेबल. सो अर्थ खुद ही बता देता है कि मैं सस्टेनेबल हूं, ठीक है? बिकॉज आई एम नीदर टेकिंग टू मच नॉर आई एम गिविंग. दैट्स व्हाई, एंड आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग इट. एंड देन so basically, because of this, the Earth's heat budget is what type of budget? A balanced budget. It is a balanced budget. It's neither surplus nor deficit, but a balanced budget. Is that okay? Which means if it is getting 100, then it should be giving 100. Now, in between, what is it doing with the 100? तो ये तीन पार्ट हमें समझना है. Okay? So heat budget of the atmosphere, when we say, or heat budget of Earth, is a balanced budget, which means if Earth is getting 100 units or percent, whichever way, आप 100% भी ले सकते हो. All the heat that the earth is getting, if we consider it has 100% heat, ठीक है? Then it is giving back to space 100 units or percent. We take from the sun and we give back also, not to the sun, to the space. ऐसा नहीं बह गए इमोशन में बोलते बोलते कि सर we take from the sun, we give back also to the sun. ठीक है? So you give back to the space. Is that okay? That is your solar system. All right. So now, so if we get 100%, we have to see where are we using it. So first, the 100% we receive, उसको पहले देखते हैं. 100% or 100 received, right? And this is the and please go on drawing with me. Tropopause, Earth surface, 100 received, which means this in between region is the atmosphere that we are talking of. Basically troposphere. ठीक है? So of the 100 that the earth gets, what does it do? Of this 100, 23 gets scattered in the space. ठीक है? How much? 23 gets scattered. And out of this 23 scattered, 6 goes
to space. It does not remain in the atmosphere. After scattering, it goes back to the space. Right? And this is hence not used by the earth. Earth को आते ही उसने वापस कर दिया. It is like the GST that you pay. ठीक है, आते ही वापस दे दे. या TDS हो गया. At source. पहले ही काट के मिला आपको. So this, now hence where does the rest go? The rest scattered goes on to heat the atmosphere. ठीक है, so rest heats the earth system, right? So it is absorbed by कितना बचा? 17 to earth, and anything going below the surface means it is heating the earth surface. It is not heating the atmosphere. So 6 is going to space and 17 is coming to the earth surface and heating the earth surface. तो ये heat earth surface heat up हो रहा है. ठीक है? Then another 36, right? So 23 हो गया. Another 36 reaches the earth surface directly. Another 36 reaches the earth surface directly. So it is not absorbed or done anything by atmosphere. It is not scattered, not reflected anything. 36 is able to touch the ground directly without being scattered or reflected. Okay? So 36 reaches the earth surface. Out of this, 2 gets reflected back to the space. How much? 2 is reflected to space. It is like light falling on the mirror and then reflecting. Okay, so 36 comes, 2 gets reflected, and hence remaining कितना गया ground में? 34 goes into the ground, heating the ground. So 34 is absorbed by the ground and heated up. So पहले का 17 plus 34 कितना हो गया? 51 units is used for heating the earth surface. Out of 100 insolation, 51 heats up, nearly 50% heats up earth surface. ठीक है? 51 heats up earth's surface. All right? And what else? Now please see. Another this is clouds, right? Another 27 unit is reflected by clouds. 27 units reflected by cloud back to space. So out of that 100, another 27 comes to the clouds, and then from the cloud they are reflected back. वो ये वाला diagram यहाँ पे. Can you see this reflected? दिख रहा है? So it is reflected back to the space. ठीक है? So कितना हो गया total? 23 plus 27. हाँ? 86. ठीक है? Sorry, 36 and this thing. So 23, 36 plus 27. 86 तो बचा कितना? 14 unit. Now that 14 absorbed directly by atmosphere. Only 14 unit is absorbed directly by atmosphere out of 100. That's why we say insolation directly does not heat up the atmosphere. Because out of 100 only 14 is absorbed by atmosphere. That's it. Of the total heat. Clear hai? ठीक है? So now if I ask you the total account, give me the total account. How much is with the earth's surface? 51. How much is with the atmosphere? Atmosphere. कितना है? 14. कितना हुआ? 51 plus 14. कितना हुआ? 65. How much is left?
Where is all that? Check in the space. दिख रहा है? All this 6 plus 2 plus 27 कितना हो गया? 35. So 35 is returned back to the space. It is like the tax. इनकम आता है तो टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, तो स्पेस का टैक्स कितना है? 35%. 35% अर्थ हीट का टैक्स दे देता है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग, रिटर्न्स बैक, राइट, एंड रिमेनिंग 65 remains with the earth. ठीक है, so now 65 is left with the earth, and where all is it? 51 with the earth surface and 14 in the atmosphere. So now we have to see what happens to this 65, क्योंकि 35 तो हम already return कर चुके हैं. Is that okay? We have already returned 35, so we have to see what happens to the 65 in the next diagram. Should we? ठीक है. So account of 65 units or percent, 65 unit or percent left with earth. Okay, left with earth. Account of 65 units or percent left with earth. Let us see. So this is the earth surface, this is the tropopause, alright, and this is the atmosphere. Earth surface, tropopause and atmosphere. Earth's surface. ठीक है? So earth surface, atmosphere and tropopause. ठीक है? And how much is with the earth surface, atmosphere? 14. And how much is with the earth surface? 51. तो दोनों numbers भी हमने लिख दिया है. Okay. So now we have to, so this is the total 65, and we have to ensure that all the 65 finally goes to space. Then the earth, then only the earth's heat budget will be balanced. है ना? Otherwise it will not be balanced. Okay. So let us see how does this become balanced. So out of this 51 that we have, 23 is radiated. 23 is radiated by the earth directly. ठीक है? And out of this 23, 17 goes to space. So direct radiation of the earth's surface is 23, and out of this 17 goes to space and 6 absorbed by atmosphere. Six absorbed by atmosphere and 17 to space. ठीक है? So 23 it is releasing. Out of this 23, 6 only gets absorbed by atmosphere directly, and the remaining goes to the space. 17. So 65 जो आपको ऊपर पहुंचाना था, उसमें से 17 you have already sent. ठीक है? Right? Then next, another 9 units are released to the atmosphere by convection. जो convection हमने पढ़ा था, so convection is releasing 9 units to the atmosphere, which will heat up normally the upper parts of atmosphere and all. ठीक है? So 9 units goes into this. Alright? And कितना हो गया? 23 and 9? 23 and 9, 32. And total था कितना? On the earth surface? 51. So how much is left with the earth surface? 19. So that 19 goes to atmosphere by the process of evaporation and condensation. Evaporation on the earth surface and condensation in the atmosphere. ठीक है? Evaporation on the earth surface and condensation in the
एटमॉस्फेयर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ये हमने बात किया है पहले। व्हाट हैपेंस इन इवेपोरेशन? वाटर इज टर्न फ्रॉम लिक्विड टू, एंड व्हाट हैपेंस इन टू हीट इन दैट प्रोसेस? हीट होता है कुछ इवेपोरेशन में। सो इवेपोरेशन में हीट इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड? Absorbed. This is something which is more important to remember, that in evaporation heat is absorbed, it is taken, right? Whenever something is evaporating, it is taking heat, right? And in condensation, when something is turning from gas to liquid, then what is it doing? It is releasing heat. It is not only turning from liquid to gas, gas to liquid, but it is also losing heat. तो ये हीट का एक पूरा साइकिल है। देखो, most of the matter has 3 states: solid, liquid and gas. ये तो हमें पता ही है। Have I done this discussion with you? No. So every object will be in one of these 3 states, right? एंड गैस, और इसका ऊपर एक प्लाज्मा स्टेट भी होता है, बट वी डोंट टॉक ऑफ दैट, हमें उसका जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम और व्हेन यू आर टर्न फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यू हैव टू बी हीटेड और कूल्ड। इफ समथिंग हैज टू बी टर्न फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हीटेड, सो इट इज अब्सॉर्बिंग हीट और रिलीजिंग हीट? अब्सॉर्ब, सो हीट अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, व्हेन यू टर्न समथिंग लिक्विड टू गैस, इवेपोरेशन, क्या हो रहा है? हीट अब्सॉर्ब। ठीक है, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम गैस टू प्लाज्मा ऑल्सो, यू हैव टू बी फर्दर हीटेड। ठीक है, इज दैट ओके? वेयर एज व्हेन अ गैसियस थिंग इज टर्निंग इनटू लिक्विड, it is absorbing heat or releasing heat? Release. And when liquid is turning to solid, water to ice, absorbing heat or releasing heat? क्या होना चाहिए? If you cool down something, release. अब इन सारे प्रोसेस का नाम क्या क्या है वो याद करना है। ठीक है, सो गैस टू लिक्विड को क्या बोलते हैं? गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड एज condensation. लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। अब ये सब रटना है। ठीक है, तो यहां तक ठीक है, बट अगर आप सीधा कंडेंसेशन का डेफिनेशन रटने लगोगे, सॉलिडिफिकेशन का डेफिनेशन, हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, हर वर्ड देके उसका डेफिनेशन दे देते हैं, बोलते हैं रटो, राइट? तो रटना नहीं है, पहला लॉजिक समझ लेना है, उसके बाद रटने वाला काम मिनिमम है। तो इस प्रोसेस में अगर आप ये भूल भी जाओगे कि कंडेंसेशन क्या था, एटलीस्ट यू नो उसमें हो क्या रहा था। ठीक है, इज दैट ओके? एंड व्हाट इज सॉलिड टू लिक्विड? मेल्टिंग। एंड लिक्विड टू गैस? इवेपोरेशन। तो इन सब प्रोसेस में हो क्या रहा है? इज दिस क्लियर? देयर आर जस्ट 2 थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, ईदर अब्सॉर्बिंग हीट और रिलीजिंग हीट। ठीक है, उसी तरह जैसे कि आपका आप सॉलिड टू सीधा गैस हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ये सब प्रोसेस है, और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें प्रोसेस में फंसा देते हैं, है ना? हमारा एजुकेशन हमको इतना सारा प्रोसेस दे देगा कि हम वो वही रटते रह जाते हैं, राइट? एंड वी मिस द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट। पहला सिंपल लॉजिक समझाना चाहिए, और ये वही नहीं होता, बाद में भी होता है। जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो भी आप यही करने वाले हो, आप लोगों को प्रोसेस में फंसा दोगे। ये फाइल लाओ, वो पेपर लाओ, ये करो, वो करो, पर्पस भूल जाते हैं, करा क्यों रहे। और अच्छा ब्यूरोक्रेट कौन है? जो कुछ ना करे। अच्छा ब्यूरोक्रेट कौन है? हु अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड एनी एक्टिविटी। व्हेन यू गेट सेलेक्टेड, रिमेन दिस सेंसिटिव. If you don't remain this sensitive and you try to become a bureaucrat of processes, then people will hate you. जिस ब्यूरोक्रेसी को आप गाली देते हो वही आप बन जाओगे। ठीक है, so don't get lost in
the process, right? Understand the logic behind those processes. What is happening? The essence क्या है? और essence हमेशा बहुत short होता है. Okay. So, anyways, coming back. So, if I take you back to this, what is happening in this evaporation condensation? When the object is getting evaporated, it is turning from, so energy wise, low to high, which means it is absorbing heat. So in evaporation, heat is absorbed, and the same when it is going in the sky and the gas is turning into liquid, it is cooling down, so heat release. So this is how heat is transferred from the land or the surface of the earth to the atmosphere. ठीक है? So good enough. Now how much heat is there in the atmosphere? अभी कितना atmosphere में heat हो गया total? Please see how much heat the earth system has passed to the atmosphere. How much heat the earth system has passed to the atmosphere? ये कितना है? 34. And how much was already in the atmosphere? So how much is this total? 48. And how much has already gone to the space? आया समझ में? So out of 65, 17 has already gone to the space and 48 remains in the atmosphere. So in this 48, how much directly came from the sun and how much came from the earth? 34. This is why we say that the earth's contribution in heating the atmosphere is more. And another thing, that 14 will heat up the upper part of the atmosphere and this 34 will heat up more the lower part where we live. So हमारा part तो mostly 34 से है. Do we get it? Is this clear? That's why we say most of the heating in the atmosphere, which means tropopause is terrestrial heat. ठीक है, वो terrestrial heat है जो कि हमको कहता है. Is that all right? No? बोलो बोलो क्या डाउट है? क्या पार्ट? क्या पार्ट बोलो? देखो, आप खुद देखो, आपने इसीलिए हमने सब कुछ सामने लिखा है. ठीक है, अभी देखो, पहला, सबसे पहला, एटमॉस्फेयर में हाउ मच वाज अर्लियर देयर एंड हाउ मच वाज ऑफ द अर्थ? 51. फ्रॉम दिस 51, हाउ मच द अर्थ इज डायरेक्टली सेंट टू द स्पेस? 17. सो अर्थ इज हैविंग हाउ मच नाउ लेफ्ट? 51 माइनस 17 कितना हुआ? सी सेट भी निकालना है, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए. बोलो 51 माइनस 34. You know, one simple way of ensuring that your calculations are right, always think in terms of money. You know, this is the simplest way of ensuring that you don't do wrong calculation. The moment you start thinking in terms of money, आप इतना फोकस्ड हो जाएंगे ना क्योंकि वहां लॉस होने वाला है. ठीक है, तो आपका एक बार करके देखो, मतलब आई अश्योर यू, यू डू इट. दिस इज समथिंग, यू नो, माई डॉटर व्हेन शी वाज यंग, सो शी यूज्ड टू हैव दिस प्रॉब्लम इन कैलकुलेशंस. कभी कभी वो गड़बड़ करती थी. सो देन शी सेड, पापा ध्यान नहीं रहता. मैंने कहा अच्छा ठीक है, जस्ट थिंक दैट हाउ मच मनी यू हैव इन योर पिगी बैंक, आउट ऑफ दैट यू हैव टू टेक एंड गिव. आफ्टर दैट आई हैव सीन एटलीस्ट 70-80% इंप्रूवमेंट. ठीक है, एंड शी इज डूइंग इट रॉन्ग व्हेन शी इज नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट पिगी बैंक. ठीक है, और कुछ और चीज दिमाग में चलता होता है, तब वो गड़बड़ कर देती है. अदरवाइज, राइट, एंड दिस इज आई हैव चेक्ड विद लॉट मेनी पीपल. ठीक है, तो पैसा के थिंग में सोचना है, कोई सा भी नंबर, जो भी कैलकुलेशन करना है, सोचो इतना पैसा मिला, इतना देना है. तो अभी अभी राइट हुआ, जल्दी जल्दी आंसर भी आता है. और सब्जी वाले के पास खड़े होकर जब पैसा देना लेना पड़ता है तो वहां पे उतना टाइम नहीं लगता है और रॉन्ग भी नहीं होता है ना. और फिर लॉजिक्स भी लगने लगता है. नहीं तो हम नंबर्स में जब खेलते हैं तो हम लॉजिक हटा देते हैं. ओके, एनीवेज, कम बैक. सो 51, हाउ मच इज देयर इन द, हाउ मच इट इज गिवन टू द स्पेस, एंड सो हाउ मच इज लेफ्ट? 34. So 34 plus 14, how much is there in the atmosphere right now? 48. तो वही 48 यहां लिखा है कि 48 is in the atmosphere. And if the heat is in the atmosphere, will it cool it or heat it? अगर आप हीट दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या करेगा? अच्छा, हीटिंग और कूलिंग क्या क्या होता है ये बताओ पहले.
हीटिंग और कूलिंग आर दे ऑपोजिट ऑफ ईच अदर? हाँ, हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग का ऑपोजिट क्या होता है? पक्का? अच्छा, ऑपोजिट और एब्सेंस में अंतर पता है? हाँ, अभी आपके लाइफ में पार्टनर एब्सेंट है, शादी होने के बाद ऑपोजिट हो जाएगा, है ना? इफ यू आर अ मेल, योर पार्टनर विल बी फीमेल, नॉट एब्सेंट, है ना? अरे समझ में? तो एब्सेंट और ऑपोजिट का अंतर पता चल गया? सो कूलिंग क्या होता है? इज इट ऑपोजिट ऑफ हीट और इज इट एब्सेंस ऑफ हीट? ऑपोजिट। तो अगर ऑपोजिट है तो फिर क्रिएट भी कर सकते हैं। कूलिंग किस मशीन से क्रिएट होती है? रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है? उसमें क्या रेफ्रिजरेटर कूलिंग करता है? उसमें तो कंप्रेसर है ना? और कंप्रेसर कैसे वर्क करता है? वो कूलिंग क्रिएट करता है या हीट रिमूव करता है? क्या करता है? सो इज कूलिंग द ऑपोजिट ऑफ हीट और इट इज द एब्सेंस ऑफ हीट? On your number line, there is a number 5, suppose. What is the opposite of 5? And what is the absence of 5? है ना? तो इन दोनों में अंतर है, एक 0 है, एक -5 है। तो कूलिंग क्या होता है? इट इज 0, इट इज नॉट -5। डार्कनेस क्या होता है? आज तक क्या सोचते थे? ऑपोजिट ऑफ लाइट, है ना? लेकिन अगर ऑपोजिट है तो कुछ क्रिएट करने का मशीन भी होना चाहिए। तो डार्कनेस क्रिएट करने का मशीन कौन सा होता है बताओ? ऐसा बताओ मुझे 2-3 चीज जो रूम में लगा के डार्कनेस क्रिएट कर सकते हैं। नहीं होता है कुछ, यू नो। सो हीट का ऑपोजिट इज, देयर इज नथिंग लाइक ऑपोजिट ऑफ हीट, इट इज जस्ट, व्हाई? बिकॉज इट इज एनर्जी। तो एनर्जी का ऑपोजिट नहीं होता, एंटी एनर्जी हो जाएगा वो, है ना? तो अगर लाइफ में डार्कनेस लग रहा है, लगता है ना, तो हमसे क्या मिस्टेक हो रही है? क्या कोई आपकी लाइफ में डार्कनेस क्रिएट कर सकता है? नहीं, सिर्फ आप लाइट को देखना बंद करते हो। आंखें, एक्चुअली आंखों का इवोल्यूशन ही लाइट से हुआ था। मैंने आपको बताया था पिछला क्लास में। द सिंपलेस्ट आई दैट डेवलप्ड ऑन दिस अर्थ वॉज नथिंग बट अ लाइट सेंसर। ठीक है? तो जब आप लाइट का, उसके ऊपर देयर वाज अ कैम्ब्रिज लेक्चर सीरीज है, विजन नाम का एक बुक है। इफ यू एवर गेट टाइम इन लाइफ, प्लीज रीड इट। राइट? 2022 का या 21 का कैम्ब्रिज लेक्चर सीरीज है एक। तो दे हैव टेकन डिफरेंट aspects of vision. So they have started with evolution of eye and then they have gone to our vision in life and about the world. तो पूरा बुक का नाम उन्होंने विजन रखा है। तो आपका आंख देखना कैसे शुरू करता है और आप किसी चीज को लाइफ में विजुअलाइज कैसे करते हो, इंक्लूडिंग साइंस एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो सब कुछ उसमें कवर किया उन्होंने थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स। ओके, सो आई वुड सजेस्ट पढ़ते रहो। मतलब लाइफ में कुछ कुछ पढ़ते रहोगे तो देखो, कभी कभी होता है ना, आज पता चला ओह शिट यार, ये तो आज तक कुछ उल्टा ही सोच रहे थे है ना? सो दोज मोमेंट्स कम एंड दैट इज एजुकेशन। व्हेन यू गेट दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ, व्हेन यू रियलाइज समथिंग, अच्छा यहां तो कुछ समझ के हम कुछ और ही बैठे थे, दैट इज एजुकेटिंग योरसेल्फ। सो अगली बार लाइफ में जब अंधेरा फील होगा तो क्या करना है? ये नहीं बोलना है कि तुमने मेरा लाइफ अंधेरा कर दिया। ये सब फिल्मी डायलॉग है, बकवास, नॉन साइंटिफिक, इलॉजिकल। ठीक है? क्या बोलना है? हटो क्या बोलना है? हटो, ताकि लाइट आने दे। ठीक है? दिस इज एटीट्यूड, इसी को एटीट्यूड बोलते हैं। जब तक आप अंधेरे की तरफ देखते रहोगे तो अंधेरा ही दिखेगा। ठीक है? तो जस्ट अगर लाइट देखना है तो अपना नजरिया बदलिए।
सिर्फ नजरिया बदलिए, सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, आप लाइट की तरफ देखने लगोगे तो आपको लाइट ही दिखेगा। ओके, सो अभी क्लियर है? आपका डाउट तो क्लियर हुआ, साथ साथ में एक दो छोटा मोटा और डाउट भी लाइफ का क्लियर हो गया। ओके, हाँ जी, 23 यूनिट्स नहीं, देखो अब वही है, यहां देखिए, ये नीचे 51, ये 51 टोटल वाज देयर। Out of this 51, 23 was radiated. Are you talking of this 23? So 23 was radiated. Out of this 23, how much has gone to atmosphere? Only atmosphere 6. And how much has gone to space? तो वो तो खत्म हो गया. Now remaining, ये radiation से गया, direct radiation. Earth also releases by other processes, such as convection. तो convection से उसने कितना रिलीज किया? 9. Evaporation, how much did it release by evaporation? 19. So when you add that 9, 19 and 6, 34. So 34 has gone to the atmosphere from the earth surface. How much was already with the earth surface? 14. So 14 plus 34, वही आपने बोला शुरू में कि 48 है. ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर में कितना है? 48. And do you get it? So if I ask you that how much heat does the sun give directly to the atmosphere? 14. How much heat does the earth give to the atmosphere? 34. And how much is there with the atmosphere? And that 48 will do what to the atmosphere? Keep the atmosphere warm so that we can exist and the Goldilocks conditions are sustained. ठीक है, and what holds this 48 in the atmosphere? The greenhouse gases. So the more the greenhouse gases, more will be the holding capacity. And second is, for how long does the greenhouse gases hold? So दो capacity है greenhouse का. One, how much they can hold, and second, how long they can hold. Different greenhouse gases have different capacity of how much and how long. ठीक है, तो अब हमें यहां समझना है. तो if they hold it for long, suppose we release such gases that hold for long, then what will happen? They will absorb, but they will not release. Right? They will keep absorbing but not releasing. So the total heat with the earth system might increase because it is holding more heat now for longer time. So if the total heat with the atmosphere increases, the atmosphere will become warmer. This is what you call as global warming. आया समझ में? So this is what greenhouse gases do. ठीक है, they just hold, but how much they hold and how long they hold. जैसा आपका पॉकेट है, ठीक है, तो आपका पॉकेट कितना बड़ा है और आप कितना देर तक पैसा रखते हैं, दैट विल इंश्योर कि आपके पास टोटल, मान लीजिए आप, योर पेरेंट्स आर सेंडिंग यू 1000 रुपीज सपोज, ठीक है, एंड यू आर स्पेंडिंग दैट 1000 रुपीज, but let us say if you go on holding more of the 1000 rupees that they send you and you hold it for long, what will happen? The money with you will be higher, so you will be economically more warmer. आ रहे समझ में? होते ना पैसे का गर्मी, तो वो वाला गर्मी आ जाएगा आपको. इज दैट ओके? क्लियर? सो डू वी अंडरस्टैंड दिस? अभी डाउट क्लियर है? वेरी गुड. And also you understood this difference between heat and cold and light and darkness. ये सब भी थोड़ा समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड. So now let us come to the next part. हाँ जी बोलिए. When we say that the heat budget is balanced, yes, अर्थ इज गिविंग. अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, देखो ये डायग्राम हमने कंप्लीट नहीं किया. वेरी गुड, थैंक यू. सो दिस 48 विल ऑल्सो बी रिलीज बैक टू द स्पेस, बट व्हेन? नॉट व्हेन यू गेट इट. You will keep it, and then over a period, Earth will release this 48 also to the
space. So this is atmosphere will release this heat to space, not the Earth's surface. Atmosphere, and over a period it will release. Is that okay, dear? So now how much is released to the space? 17 plus 48. Kitna ho gaya? You have given the complete thing. Okay, very good. So please do write that. That finally this is what you call as atmospheric radiations, but they are part of your terrestrial radiation only. Okay, so this is atmosphere's radiation and heat release. Because space में you cannot transfer heat by any other mechanism except for radiation. The only way how heat travels in space is radiation. You cannot do convection, conduction, advection, कुछ नहीं कर सकते. Because conduction, convection and advection happen only with particles. And in space there is no particle. So how do you release the heat ultimately to the space? Only as atmospheric radiation. Is that okay? Clear hai? Does that answer your question also, dear? Okay, very good. So should we move beyond this? Yes or no? So heat budget हो गया पूरा, समझ में आ गया? पक्का? Very good. So the vertical heat budget understood. Now we come to horizontal heat budget. Horizontal heat budget. And this is something that we have already slightly talked. वो हमने पहले बात भी किया हुआ है. So we can do this fast and then I'll give you a break, so that after the break we start with next set of topics. ठीक है? So when we talk of horizontal heat budget, what did we understand in terms of, go on drawing with me, tropopause or yeah. So 0 degree, 45 degree, 90 degree. Pole on one side, equator on the other. And in between you have something more and the space. So now, what did we understand? Which region receives more heat than the other? If I talk of two regions, this 0 to 45 and 45 to 90, which region do you think will receive more sunlight? 0 to 45. So the heat received is this, by this region. Okay. And which region will receive less heat? 45 to 90 will be receiving less heat. Okay. And if do you think the tropical region or the 0 to 45 will release all the heat that it receives? Does it release all the heat? No. So it will release less than the heat that it has received. But the polar region, I told you, even in winters, when there is polar night and all, it is still releasing heat. So ultimately that region is releasing more heat than it is getting. Okay, though that heat is less than the heat released by tropical region, but still it is more than the heat that that region receives. Okay, so ultimately you get a heat deficit in this region and a heat surplus in the other region. So this is heat surplus and this is heat deficit. Okay, the polar region has a 45 to 90 degree has a deficit and the 0 to 45 has a surplus. Is that okay? So, but if this also continues for long, then what will happen? This region will become hotter and hotter and that region will become colder and colder, but that doesn't happen on Earth. So how do we manage the transfer, or how do we manage this thing? We manage by what we call as heat transfer. As heat transfer takes place, not only advection, more ways, heat transfer. Okay, so it happens by heat transfer from warmer region to colder region, and this transfer can happen by convection also. It will go in the upper atmosphere, then it will move, right? It can happen by evaporation also. Clouds will form at one place and rain at some other place. तो सारा process लगता है उसमें, ठीक है? So don't say one name. It is by
various processes, but heat transfer will take place. Is this okay? Heat transfer, and this heat transfer takes place in the form of different processes, and those processes create something visible to us. We call those as phenomena. Okay, so heat transfer by different processes that lead to, ये आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, मे बी यू कैन राइट इट इन द नेक्स्ट पेज. ओके, सो ये पूरा का पूरा पार्ट by different processes that lead to different phenomenon, right? And these different phenomenon are what we call as, इसी को हम बोलते हैं weather phenomena. Weather phenomena. Okay. And when we talk of this weather phenomena for short, so weather phenomena, and these are small time phenomena. They will happen for 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, 2 hour, 1 day, 2 day, 1 week, 1 month, right? So that kind of a thing is what we call as weather. Different time पे हमारा होता है ना, आज जैसे अभी आज का weather ऐसा है, कल का ऐसा है, for last 1 month the weather is like this. So all these things we call as weather. And the integrated sum of this इंटीग्रेटेड सम, इंटीग्रेटेड का मतलब ही सम होता है, बट आई एम स्टिल राइटिंग इंटीग्रेटेड सम, समथिंग लाइक कैलकुलस. जैसा कैलकुलस में एडिशन करते हैं ना, सारा छोटा छोटा पार्ट ऐड करके और एक बना दिया, सो समथिंग लाइक दैट. व्हेन यू इंटीग्रेट ऑल द वेदर फिनोमेना यू कॉल इट एज क्लाइमेट. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड सम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, over a long period. And how long? 30 to 50 years. इंटीग्रेशन में लिमिट होता है ना 0 to n, तो जब आप वो n, इसमें क्या है, इसका लिमिट है, क्या इंटीग्रेट करना है, 30 to 50 years. When you add up for that much period you get climate. This is called, we call as climate. We call as climate. ओके, क्लियर है, पक्का? कुछ डाउट है, बोलो, पक्का? Everyone is clear, right? So we understand the difference between weather and climate. What is weather? Weather are shorter period and they are small phenomena that you get to see. ठीक है, जैसा रेन हो रहा है तो हम बोलते हैं बैड वेदर है, सनशाइन है सो वी से गुड वेदर, ऐसा होता है ना. तो डिफरेंट वेदर फिनोमेना आर देयर. सो कैन यू गिव मी द नेम ऑफ डिफरेंट वेदर फिनोमेना दैट यू हैव सीन इन योर लाइफ, योर हर्ड अबाउट, हर्ड, सीन, वीडियो सीन, व्हाटएवर. रेन, क्लाउड, स्नोफॉल, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, thunderstorm, lightning, tornado. I'm saying seen, heard और video seen सब चलेगा. Cyclones, typhoons, hurricanes, और बोलो, हाँ, और कुछ देखा है? नहीं सर, हम लोग बचपन से रूम बंद करके IAS का तैयारी कर रहे हैं. We don't see anything in life. सब कुछ देखेंगे. We have promised to ourselves we will see anything and everything आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड. तो अगर सब कुछ बाद में देखोगे तो सिलेक्ट किस बेस पे होगे? सो यू हैव टू सी राइट नाउ. ठीक है, सो अगर जैसा लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ भी देखना सिलेक्शन के बाद, अभी कुछ मत देखो, नेक्स्ट टाइम क्या आंसर करना है, कुछ नहीं देखा तो सिलेक्ट किस बेस पे होंगे? ठीक है, तो सोचना तो है ही. ओके, सो गुड इनफ, right? So do we understand the different weather phenomena? So different phenomena, when you add up all those phenomena you get climate. And in different regions, for example, how many of you in India have seen snowfall?
है ना? ये देखो कितने कम लोग हैं। यही क्वेश्चन अगर मैंने ग्रीनलैंड में पूछा होता, है ना, तो इतने ही कम लोगों का हाथ नहीं उठा होता शायद, और वो भी सारे टूरिस्ट होते। डू यू गेट इट? So what am I trying to tell you here? That different regions have different types of weather phenomena. है ना? Different region will have different weather phenomena, and because of that, different regions will also have different climate. So when you talk of all the climate of different regions, you call it as world climate, right? So world climatic regions. तो वहां तक हमको जाना है. Is that okay? Very good. So अभी आगे बढ़े, ब्रेक ले लें. हाँ, ले लो ले लो, परफेक्टली फाइन. आपको ब्रेक चाहिए? बोलता मैं रहता हूं क्लास में, ब्रेक आपको चाहिए होती है. ओके. So now let's settle down. हो गया, we had a long break. So coming back to the difference or the effects of weather and climate, if I ask you, how does weather and climate differ, or what is the difference between the effects of weather and climate? If I ask you, क्या effect है? How does, yeah, day to day life. और बोलो बोलो, लिसनिंग, और बोलो. और बोलिए. Effect of climate is more long term. So can you people give me some example? आपके ऊपर क्या इफेक्ट है? Give me the effect of weather and climate on you. अपना ऊपर देख के बोलो. हाँ? स्किन कलर वेरी करता है किससे? क्लाइमेट से या वेदर से? दोनों से होता है. झूठ क्यों बोल रहे हो? है ना? जब ज्यादा धूप में घूमा है तो क्या बोलते हैं? सावले हो गए. है ना? बहुत देर से धूप में थे यार, थोड़ा काला लग रहा है. ओके, सो दैट काला गोरा लग रहा है इज वेदर, नॉट क्लाइमेट. वेयर एज क्लाइमेट का इफेक्ट क्या है? आप ब्राउन पीपल है या व्हाइट पीपल है या ब्लैक पीपल है, ये क्लाइमेट है. ठीक है, राइट? व्हाट विल यू बी कंसिडर्ड, है ना? दैट इज क्लाइमेट. एंड व्हाट डू यू लुक लाइक एट दैट गिवन मोमेंट, दैट इज वेदर. इफ यू आर मोर अंडर द सन, इफ यू आर मोर एक्सपोज टू द सन, होता है ना? है ना? कई लोग विंटर में गोरे हो जाते हैं. वाई? ऐसे ही सन में नहीं निकलते. और कई लोग विंटर में ही काला हो जाता है ना? क्यों? समर में वो आराम से अंदर अंदर रहता है, विंटर में थोड़ा धूप बैठा, है ना? हैव यू सीन? नाउ दिस काला गोरा डजंट मैटर टू मच. ठीक है, बट ऑल इट मैटर्स इज, मतलब हाउ व्हाट इज द इफेक्ट. इज दैट ओके? तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. नाउ द फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ योर हेयर, दैट इज व्हाट. अब ये क्या है? ये क्लाइमेट है. ठीक है. हाँ, ये जेनेटिकली नहीं है. वो जो जेनेटिक्स है वो भी क्लाइमेट ही है. ज्योग्राफी सब के ऊपर है. ठीक है, आप जेनेटिकली वहां कैसा इवॉल्व हुए, वो क्लाइमेट, वो आपको ज्योग्राफी बताता है. ठीक है, तो जेनेटिक्स में मतलब ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, जेनेटिक्स में है, लेकिन अगर आपका डिसेंडेंट्स फ्यू थाउजेंड ईयर्स या फ्यू लाख ईयर्स किसी और जगह जाके रहेंगे, color changes would happen. Is that okay? So I hope you understand. So this is one. Second, what else? और कुछ? Food habits. जैसा कैसा, मतलब क्या खाएंगे? वेदर में क्या खाएंगे, क्लाइमेट में क्या खाएंगे? ये तो फूड हैबिट तो ठीक है. हाँ, वेदर में क्या खाएंगे? आज क्या खाएंगे, वो क्या है? हाँ, बताओ यार. ऐसा मतलब दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन. यू हैव टू आंसर दिस. दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन योर मेंस. प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन सम वेदर एंड क्लाइमेट. हाउ डज इट वेरी? एंड यू हैव टू राइट अ 250 वर्ड आंसर. तो कैसे क्या लिखोगे? हाँ,
स्पाइसियर फूड इन कोल्डर रीजन, तब तो ग्रीनलैंड के लोगों को सबसे ज्यादा स्पाइसी खाना खाना चाहिए. दे ईट, हाँ, सो स्पाइस वो तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, है ना, स्पाइस को ट्रांसलेट कर दिया तो मसाला बन गया. ट्रांसलेट नहीं करना है. हाँ, देखो क्वेश्चन देखो, मतलब यार ये ना बहुत सारा ट्रेनिंग हो रहा है आपका. देखो जब भी हम ट्रैप में फंसते हैं तो हम क्या करते हैं, स्केप करने के लिए कुछ ना कुछ रीजन ढूंढते हैं. और यही सारी गलतियां होती हैं जो आप इंटरव्यू में करते हो. जब वो आपको ट्रैप कर लेते हैं तो आप क्या बोलोगे, मान लो जैसा इनसे पूछा है ना, तो सर स्पाइस, तो वो बोल देंगे सर मसाला. तो उसको दो चीजें समझ में आई, एक तो जो मैंने पूछा वो समझ में नहीं आया, और इसको डिफरेंस और ट्रांसलेशन में मतलब नहीं पता. समझ रहे हो? मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू पर्टिकुलर, डोंट टेक इट पर्सनल. नथिंग दैट आई से इन द क्लास इज पर्सनल टू एनीवन. My only purpose is to make everyone understand through examples, which you people only create, that आपको ये फाइनर डिफरेंस समझना है चीजों में. ठीक है? So if until they ask you a translation, don't give it. And if you find out कि अब मेरे पास आंसर नहीं है, right? Then what is the best answer? You have to accept that, sir, I don't know beyond this. मतलब सॉरी सर नहीं, आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो. ठीक है? You don't have to feel sorry for not knowing the answer. You just have to accept. अगर आप सॉरी फील करते रहोगे तो दुनिया में तो इतना कुछ है जो आप नहीं जानते हो. तो पूरा लाइफ ही सॉरी में निकल जाएगा. ठीक है? So you don't have to be sorry for what you don't know. You just have to say that I don't know. That's it. All right? अरे सर में तो सॉरी भी नहीं फील करना है कि नहीं आता है. Until unless they say ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है? और अगर बोल भी देते तो क्या बोलना है, सर हो सकता है मिस हो गया हो. All right. So coming back. Yes, my question was. So give me those finer difference. Think through. आप मैं 6th क्लास के बच्चों से नहीं पूछ रहा हूं. या you know, you have to think like a graduate and give me the answers. How will the weather and climate differentiate? And this is something that I don't have to teach you, because the moment I'll start giving the answer, you will say, sir, सब पता था. तो आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो? One at a time. So he's saying, so we'll come to you. Though you started, but now he has started, तो इनको allow कर देते हैं. हाँ जी, बोलिए. In the food, the food is generally lighter. Acha, what do you eat, by the way? What you eat is something that grows in that region. You know, and what ensures what will grow in that region? The weather and climate. तो आपको आंसर वैसा स्टार्ट करना चाहिए, isn't it? We eat what the weather and climate of the region allows to grow. है ना? फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में ज्यादा क्या खाते हैं? राइस. मोस्ट ऑफ इंडिया ईट्स राइस. wheat is eaten only in parts of India. ठीक है? राइस हमारा मेजर कंजम्पशन राइस है मेजर एरियाज में. इफ यू सी होल ऑफ साउथ इंडिया इट इज राइस. इफ यू सी पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इट इज राइस. ओनली इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट्स दैट यू फाइंड wheat consumption to be higher, and wheat consumption has increased only due to green revolution. That also you should know. उसका पहला wheat नहीं होता था हमारे यहाँ. Wheat was less consumed. What were we eating? पंजाब का, if I ask you what is the most favorite dish of Punjab, it is not गेहूं का रोटी, है ना? किसका रोटी है? मक्के की रोटी है, क्योंकि वहां पे वो उगता था. Wheat has started growing now, and now that rice is also started growing, have Punjabi started eating rice? नहीं खाते हैं उतना. वहां पे राइस कंजम्पशन अभी भी लो है. कंजम्पशन लो है, प्रोडक्शन हाई है, हाईएस्ट प्रोडक्शन है, लेकिन कंजम्पशन वैसा नहीं है. दे डोंट ईट राइस लाइक पीपल इन तमिलनाडु एंड पीपल इन वेस्ट बंगाल एंड पीपल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और पीपल इवन इन द वैलीज रीजन ऑफ कश्मीर. इन वैली ऑफ कश्मीर राइस कंजम्पशन इज मोर. ठीक है? इफ यू गो टू हिमाचल राइस कंजम्पशन इज मोर, बट द मोमेंट यू कम टू पंजाब राइस कंजम्पशन इज लेस. हरियाणा राइस कंजम्पशन इज
So what do you eat? That's why I asked you. ठीक है, your weather and climate, your eating habit is decided by your weather and climate. Eating habit. What all is the basket of your food basket? ठीक है. For example, many of us say, sir, we are non-vegetarian. How many of you are non-vegetarian? I generally ask this question. और इसमें शर्माना नहीं है कि यार साथ वाला क्या सोचेगा, पक्षी मार के खा जाता है. हाँ, how many of you are non-vegetarian? Honestly. अच्छा, how many of these people who are non-vegetarian? Keep your hands up. अभी देखना क्या होता है. How many of these people जिनका हाथ अप है, how many of you have eaten seal meat? देखा, पूछ रहे हैं क्या? seal meat I asked. seal, SEAL. reindeer meat किसने खाया है? reindeer meat हाँ खाया है. वेरी गुड. सील मीट भी खाया है. ठीक है, अब आप सब देख रहे हैं यार इसको रेंडियर मीट कहां मिला इंडिया में. दिस इज क्लाइमेट. ठीक है. इफ माई क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू रशियंस, पूरा का पूरा क्लास हाथ ऐसा खड़ा रखेगा. इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू पीपल इन मे बी दोज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड ऑल, ग्रीनलैंड एंड ऑल, पूरा क्लास का हाथ ऐसा ही रहेगा. बिकॉज दे ईट, बिकॉज दे गेट इट. And you don't get it, so you don't get it. This is climate. Are you understand? Do we understand this? So climate affects your body, right? Weather affects short-term changes on your body. Okay. For example, you might have a suntan. That is weather. Same ways, climate affects your food basket. कि क्या क्या आप खाते हो, right? Weather affects when will you eat that. For example, if I give you the option of soup and ice cream right now, ठीक है, so some of you might still choose soup, but if I give you the same option on 48 degrees temperature, तो आप में से कितने हाथ खड़ा करोगे सूप वाले? मतलब वो बिल्कुल जो भूखे टाइप होते हैं ना, हाँ चिकन सूप है, हाँ पी लो, 48 है तो क्या हुआ, चिकन तो है. ठीक है, होते हैं, सभी होते हैं. कॉलेज में हम भी थे, है ना, जहां मिल जाए, क्योंकि यार पैसा ही नहीं होता था. तो अगर 48 में भी चिकन सूप है तो पी सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 ग्लास पानी पी लेंगे बाद में. ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन. इज दैट ओके? है ना. जैसे आजकल आप लोग चाय है, कितना भी गर्मी है बाहर जाता है, अब 2 ऑप्शन है, 20-30 रुपए का कोक है और 5 रुपए का चाय है. कितना भी गर्मी है 5 रुपए का चाय पीते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते उसके ऊपर यार. सिंपल सा बात है ना. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट. सो दिस इज हाउ योर weather decides what you will consume when, and climate will decide what all will you consume. ठीक है. Obviously there will be more factors like social factors, cultural factors. ठीक है. For example, if you go to Gujarat, people don't eat fish, right, despite being a coastal region. है ना. तो बहुत सारा regions में ऐसा है. पंजाब में non-veg consumption is high. If you go to Haryana, non-veg consumption is low. ठीक है, बिकॉज देयर दे डोंट ईट सो मच. मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मॉडर्न वंस. वहां पे लड़ाई भी होती है. आई हैड अ हरियाणा का पार्टनर इन माय कॉलेज डे, इन माय स्कूल डे, सॉरी इन माय यूपीएससी प्रिपरेशन डेज. सो ही केम फ्रॉम अ रीजन विच इज बियॉन्ड गुड़गांव. तो ही यूज्ड टू टेल कि उनका गांव में लड़ाई होता है. व्हेन पीपल फाइट इन देयर विलेज, लेडीज विल से टू ईच अदर, तुम क्या बोल रही है, तुम्हारे यहाँ तो अंडा बनता है. ठीक है. Now this is a issue. Do you understand this? और होता है ऐसा. I'm not, मतलब people from Haryana, that belt, beyond Gurgaon and all, है कौन है इधर क्लास में? So have you heard something like this? अपना गांव में नहीं सुना होगा maybe, but have you heard? I'm talking of the region around that Atari wala, Atari and all that, है ना? So there you have villages around that region, which, so there they have this, मतलब. So all I'm trying to tell you that how very small things are also culturally decided, but the major factor deciding is climate. Climate and geography is almost the major deciding factor when it comes to variation. Keep this in mind. मतलब सबके पीछे मोस्टली कुछ ना कुछ जोग्राफिकल फैक्टर है. अगर कल्चर वैसा है तो उसके पीछे भी जोग्राफिकल फैक्टर होगा. कल्चर नेवर इवॉल्व्स इन आइसोलेशन. हर कल्चर जोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ ही इवॉल्व होता है. ठीक है. इज दैट ओके? राइट. सो फूड
this thing, then your clothes, your clothing habit, that is also decided by your wardrobe. मतलब आपके पास कौन कौन सा कपड़ा है, that is decided by, and what are you wearing today? Weather. आया समझ में? So this is how, this is the finer difference between weather and climate. All right. The prediction that you get on a day-to-day basis, weather. The topic that we are fighting for in UN and weather, दोनों है वहां. ठीक है? Climate change, but along with climate change, we are also talking of the weather changes. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ climate के लिए. ये that's why I gave you that point, because many people lied कि हम UN के अंदर सिर्फ climate change के लिए लड़ रहे हैं. वो climate change के लिए लड़ रहे हैं, but that is also affecting weather on a day-to-day basis. For example, hot seasons are becoming hotter, cold seasons are becoming extremely cold, rainier seasons are becoming, extremely rainy. ऐसा हो रहा है ना, dry seasons are becoming extremely dry. So ये सब क्या है? The weather outcome of climate change, because they are related to each other. Is this okay? So weather and climate, hopefully we understand this. So now if I ask you, once you understand these broader difference between weather and climate, my next question to you would be that how do we measure weather and climate? Weather and climate ko, if you have to say that this is the weather like, so क्या क्या बताओगे? First thing you will say is temperature. So factors affecting weather and climate. If I ask you factors affecting weather and climate, so in terms of which factors will you talk? सबसे पहला, you said temperature. You will talk in terms of temperature, है ना? Or if you have to explain climate or weather, in which terms will you give the answer? सबसे पहले आप बोलेंगे, suppose for example if you go to a region, let us say I send you to Estonia. अब कहाँ पे है पहले तो ये पूछो, है ना? वो Baltic Sea के पास में है, European region, northern part. If I send you to Estonia and there you are talking to kids in class 5, right? And they have hardly ever seen an Indian, suppose. And then you go as a diplomat and then you are told to introduce your country to those children. मैं बड़ों के सामने भेज सकता लेकिन आपका आंसर चेंज हो जाएगा. So if you go to those children and you have to tell that which region you come from, है ना? And they ask you, sir, what is it like in your country? तो क्या बताएंगे आप? What will you say in terms of weather and climate if they ask, those kids ask, आप क्या बताइएगा? Moderate, hot region. So first thing you told is hot मतलब temperature. So temperature is the first factor. Second factor, pressure बता दोगे 5th के बच्चों को. मतलब यार इतना रटा हुआ है ना हमने लाइफ में कि हम ये भी नहीं देखते कि ऑडियंस कौन है. प्रेप का बच्चा को पकड़ करके प्रेशर समझा, वो बेचारा इतना प्रेशर में आ जाएगा, है ना, कि वो ऐसा करके चला जाएगा. मैम प्लीज. ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है किसको क्या समझाना है. ओके, ठीक है, राइट. सो यस, टेम्परेचर. सेकेंड, व्हाट विल आई आस्क यू, मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया, आप उसको पहले क्या क्या चीज में समझाएंगे. देन ऑब्वियसली प्रेशर इज देयर, बट दैट इज समथिंग दैट वी हैव लर्नड, राइट. तो वो दूसरा आंसर है, बट अभी ये बताइए. सो वन इज टेम्परेचर, सेकेंड इज, you will say that okay, mostly round the year it is warm and we have a small short cold period, है ना. So something like this you will say. So this is one temperature. Second, और क्या समझाएंगे? Will you talk in terms of sunlight? Will the sunlight in their country be different from the sunlight in your country? How? Intensity of the sunlight, है ना. So you will also talk in terms of sunlight, right? Sunlight. So you will talk in terms of the sunlight or how much light is there and all, right? You will say in our country the sun is relatively more in the afternoon, it is more over the head, whereas in your country you generally see it something like 3 o'clock type of position. In our country the kind of sun that you get at noon is something like 4 o'clock. उनका जो noon position है वो हमारे यहाँ पे nearly 4 o'clock position है. जैसा sun उधर होता है ना 4 o'clock पे, कहीं इधर इस टाइप से. So that is the maximum that they get to see. Is that okay? So that is your sunlight. What else? Will you talk in terms of precipitation? Rain बोलेंगे, है ना. So you have to ask कि आपने rain देखा है, क्योंकि if the more you go toward polar country, people have seen less of, because they mostly see snowfall.
तो आप वहां बोलोगे इन योर कंट्री रेन इज लेस, स्नोफॉल इज मोर. इन आवर कंट्री इट हार्डली स्नोज, है ना. इट्स ऑलवेज रेनफॉल एंड वी गेट स्नोफॉल ओनली इन द माउंटेनियस रीजन्स. आ रहा है समझ में. सो वी टॉक ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है. सो थर्ड इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन वर्ड भी हम उनको नहीं बोलेंगे, मे बी छोटा बच्चा को नहीं पता हो. फर्स्ट यू हैव, सो राइट जस्ट, सो बट यस प्रेसिपिटेशन, राइट. सो सनलाइट, प्रेसिपिटेशन. और यू कैन टॉक ऑफ विजिबिलिटी, है ना. आप बोल सकते हैं, आपके यहाँ पे आप विजिबिलिटी सीधा नहीं बोलेंगे. यू विल से इन योर कंट्री इट इज मोस्टली फॉगी, है ना. और यू नो यू हैव समथिंग लाइक फॉग एंड ऑल मिस्ट. In our country, we don't generally get fog. Most of the year it is clear. Only in some days, some regions we have, है ना. So something like that. So that is what you call as visibility, right? And you can also say that if in those countries there are no dust, you can say in our country we get daytime when there is a lot of dust also in dry hot days, right? So dust also affects visibility, है ना. तो सब आपका visibility हो गया. अच्छा, इसके सिवाय और क्या बता सकते हैं? हाँ, humidity. So maybe they don't understand humidity, so then you have to slightly explain it. But you can talk of humidity भी बोल सकते हैं, है ना. humidity आप कैसा फील करते हो? If I ask you, have you ever felt humidity? Word तो है geography में, but feel कैसा करते हैं? Sticky, है ना. moist, sticky, है ना. wet, your clothes do not dry and the sweat remains on the body, है ना. Whereas dry condition is when the humidity is less, what do you feel? You feel dryness, your skin feels dry, है ना. जैसा समर में अभी आ रहा है तो क्या होगा? हॉट समर डे, your skin will start feeling. Do you in the summer have you seen sweat on your body? अच्छा, sweat मतलब have you seen sweat on your clothes if you are outside in the sun? You will never see sweat on your body. In the hot summer season, very hot summer season, if you go out, you will not see sweat on your clothes. Why? Because it evaporates very fast, because it is dry. When do you see more sweat? Normally during monsoon season, you know. Even by sitting inside your room you might go on sweating. Why? Because the sweat does not evaporate. Are you understand? So humidity is this thing, right? Whether it is dry or, so humidity. or winds बता सकते हैं. winds, you can tell that in our country we get hot winds also. They are extremely hot. In your country you get mostly cold wind. In our country it is normally good wind, है ना. and it's not always as cold as your country, है ना. तो wind is another factor, right? और क्या है? very good. you can say clouds, ठीक है, clouds. and then finally one more factor that I'll add here, as she said rightly, was क्या था? बोलिए. pressure, atmospheric pressure. ठीक है, atmospheric pressure. Is that okay? Very good. So these are the 8 factors in terms of which we generally talk of climate or weather, and hence we say that they are the things which make weather and climate. Any region's weather and climate is made by these 8 things together, and any building block, so they become the building block of weather and climate because they make the weather and climate, है ना. तो building block के लिए हम एक और word nature में use करते हैं, element, है ना. किसी भी चीज का building blocks को हम क्या बोलते हैं? जैसे nature का building block क्या है? element. atomic level पे, उसका नीचे नहीं जाना है अभी. so at the atomic level it is the element. so we also call these factors as elements of weather and climate. ठीक है. So these 8 things known as factors affecting weather and climate are also called as elements of weather and climate. So both the terms are meaning the same, right? Factors which are affecting or the elements. Is that okay? So elements of weather and climate. So out of these elements that we have, we'll go on. So now our task is to understand each of these elements one by one, how they affect the weather and climate. Because as we understand all these 8 elements, we'll understand weather and climate, and ultimately finally we'll know all the factors affecting and then the different regions where we have different types of weather and climate. So यही हमें करना है, right? So should we start with the first one? No major doubts, right? So
The first element of weather and climate, temperature. Okay, so what is the meaning of temperature? Temperature क्या होता है? Meaning, I'm asking meaning, don't give me definitions. In my class, please don't give me definition. I'm least interested in definition. Don't give me the memorized definitions. Meaning बताओ. Measurement of heat in any body. So how do you measure the heat in any body? You use different devices like thermometer and all. And what does the thermometer do? It measures the heat in the body. So does it measure all the heat in the body? हाँ. Specific heat. वो क्या होता है? जो बॉडी रिलीज करती है. डू यू मीन टू से कि लेटेंट हीट वो रिलीज नहीं करती है? फंसने वाले हो. आप लोग भी सोच सकते हैं यार. ऑल ऑफ यू हैव पेड इक्वल अमाउंट्स. हाँ जी बोलो. और सोचो. और सोचो. Which does the first of all temperature is measurement of heat, that's perfectly fine, है ना? But does it measure? So when you are measuring the heat, which heat are you measuring? Which heat are you measuring in the thermometer? तो then you will ask, sir, which heat का मतलब क्या? अलग अलग heat होता है. Heat तो heat होता है. हाँ तो कौन कौन सा है? हाँ जी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा हीट है ये बताओ पहले. एक जो रिलीज करता है, एक जो वो अपने पास रखता है. नहीं, ऐसा नहीं है. किसी भी बॉडी के अंदर व्हेन यू सी इन द नेचर एनी ऑब्जेक्ट हैज, फॉर व्हाट डज इट यूज दैट हीट. अच्छा ये समझ लोगे तो यू विल गेट द आंसर. फॉर एनर्जी द बॉडी कीप्स हीट. नहीं, व्हाट डज इट हीट? वन, फॉर द टेम्परेचर दैट इट मेंटेन्स, एंड सेकंड फॉर द स्टेट दैट इट मेंटेन्स. है ना? स्टेट के लिए भी तो हीट होता है ना. स्टेट के लिए कौन सा हीट होता है? So do you understand this? One heat goes into maintaining the temperature, the other heat goes into maintaining the state. And when the state change, heat is released. For example, water at 100 degree. If you heat that water, what will it turn into? Will it become 101 degree water? No, it will turn into 100 degree steam. है ना? So water at 100 degree and steam at 100 degree. अब आप खुद ही बोल रहे हो दोनों का टेम्परेचर तो आप सेम बोल रहे हो. You are saying the temperature of both is same. So if you put the thermometer, will it measure? Have you added heat? Water at 100 degree to steam at 100 degree. Have you added heat or no? How will the water at 100 degree turn into steam at 100 degree? Without heat. Or you have to add more heat. For that water to turn into steam, do you have to add heat or no? You have to add heat na. Then only it will turn into steam at. अच्छा एक बात बताओ. Ice at 0 degree and water at 0 degree. क्या अंतर है दोनों में? How does the state change? वो अभी आपने देखा. Heat has to be given or taken for the state change. जब तक आप heat लेंगे देंगे नहीं तब तक state change नहीं होता है. ठीक है. वाटर एट 0 डिग्री एंड आइस एट 0 डिग्री इज नॉट सेम. राइट? फॉर वाटर, फॉर आइस एट 0 डिग्री टू टर्न इनटू वाटर एट 0 डिग्री, हीट हैज टू बी एडेड टू इट. राइट? यू हैव टू एड हीट टू द आइस, देन इट विल टर्न इनटू वाटर. सो विच हीट इज दिस? दिस इज अ हीट दैट यू कांट मेजर. आई एम नॉट आस्किंग लेटेंट एंड स्पेसिफिक. मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें. नाम बाद में याद रखो. This is the heat which cannot be measured using a thermometer. Thermometer cannot measure this heat. आप आइस के ऊपर रखो और वाटर पे रखो, दोनों जीरो दिखाएगा वो. बट अंतर है, आइस इज हैविंग लेस एनर्जी, वाटर एट 0 डिग्री इज हैविंग more energy. That's why I asked you, which heat does it measure? It measures the heat of temperature. वो टेम्परेचर मेंटेनिंग हीट को मेजर करता है. ठीक है. सो थर्मोमीटर मेजर्स और द टेम्परेचर गिव्स यू ओनली द हीट विच इज मेंटेनिंग टेम्परेचर. इज दैट ओके? सो टेम्परेचर आपको सिर्फ टेम्परेचर वाला हीट दे रहा है, वो आपको स्टेट वाला हीट नहीं दे रहा है. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. इज दिस क्लियर? जैसा कि आई जनरली से कि आपके अंदर आपको दो तरह का हीट मिलता है सोसाइटी से, है ना. एक जो रोज रोज आपको दे रहे हैं जिससे आपका टेम्परेचर होता है ना. कोई आपको कुछ बोलता है,
हाँ, आप क्या बोलते हो यार, टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहा है? ऐसे ही बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आपका टेम्परेचर बढ़ाने वाला हीट है, ठीक है। और आपके पेरेंट्स कभी कभार 5-6 साल में एक बार आपको एक हीट देते हैं, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, वो आपका स्टेट चेंज कर देता है ना? होता है, कितनों के साथ हुआ है? पेरेंट्स ने तो अभी स्टेट चेंज किया हुआ आपका, हाँ, एनर्जी दे करके, होता रहता है ना। तो या दो ही चीज हो सकता है, पेरेंट्स का कॉल से दो टाइप का रिएक्शन है। एक है टेम्परेचर बढ़ाने वाला, जिसमें आप हमेशा बोलते हो यार क्यों जबरदस्ती, मतलब क्यों मूड खराब कर रहे हो, दैट इज दैट टेम्परेचर चेंजिंग हीट that your parents are giving. And then someday when they will give you all that emotional overload, जब तुम छोटा था, हमारा सपना था, हमने सब दबा दिया, आई डिडंट बाई कार, शी डिडंट बाई दैट, शी डिडंट बाई ज्वेलरी, ताकि तुमको पढ़ा सके, तुम कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, हमारा लाइफ का टास्क कंप्लीट हो। व्हाट हीट इज दिस? स्टेट चेंज। वो चाहते हैं कि आपका स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। तो विच ऑफ द टू हीट इज इजिली ऑब्जर्वेबल? टेम्परेचर चेंज, वो जल्दी दिख जाता है, आपका साथ वाला ही बोलेगा तू अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहा है। बट वो वाला जो कॉल है वो जल्दी दिखता नहीं है, वो ग्रेजुअली दिखता है यार ये तो बंदा ही चेंज हो गया, गेट इट? आ रहा है समझ में? तो वो जो प्यार वाला कॉल है वो स्टेट चेंज हीट है ठीक है, नेचर में सब कुछ है, हर चीज का एग्जाम्पल, आपको बस देखना है चारों ओर। लॉजिक समझने लगोगे तो पूरे नेचर में कुछ ही लॉजिक्स हैं, सेट ऑफ लॉजिक्स, वो उसी सेट ऑफ लॉजिक से पूरा नेचर चलता है, हम सब कुछ। तो यू जस्ट हैव टू फिगर आउट दोस वेरी बेसिक लॉजिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है? आ रहा है समझ में? राइट, वंस यू अंडरस्टैंड, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोस लॉजिक्स, योर वे ऑफ अप्रोचिंग अदर्स वुड चेंज, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी प्रिपरेशन नीड्स फ्रॉम यू, right? You should not be the same person once you have done your preparation completely. You should have evolved, ठीक है? Right? So we have two types of heat. So temperature is measure of which heat? Your book says heat, I don't say that, I say measurable heat, ठीक है? measurable और थर्मामीटर मेजरेबल हीट, टेम्परेचर सिर्फ वो दिखाता है आपको, ठीक है? सो मेजरेबल हीट, MEAS, राइट, SURE heat. And you have another heat which is state वाला heat, state, right? That is नॉट इजी टू मेजर। तो उसको हम क्या हीट बोलते हैं? एक को हम बोलते हैं लेटेंट, दूसरे को हम बोलते हैं पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है इंग्लिश में विच यू कैन ऑब्जर्व, एंड लेटेंट इज समथिंग विच इज हिडन, ठीक है? सिंपल इंग्लिश, उसी से आपको याद रखना है, राइट? सो दैट पोटेंट वन वी कॉल एज स्पेसिफिक, दिस वन वी कॉल एज स्पेसिफिक हीट और द पोटेंट हीट। पोटेंट बोलते हैं ना, पोटेंट फोर्सेस, विच मीन समथिंग दैट कैन चेंज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर चेंज इज इजिएस्ट टू सी, all right? And the other one, state change, that is your latent heat, because it is hidden, because you can't see it, you can't measure it fast, all right? So temperature gives you the measurable heat in a object. Is that okay? बहुत basic चीजें हैं, but I do want you to, है ना, be clear with these things. Why? Because later on when I'll say evaporation transport, तो आप बोलोगे सर वहां तो टेम्परेचर में आपने कुछ और बोला था, because these doubts do come, ठीक है? So I'm trying to settle them right away. Okay, clear? So when you are measuring the temperature, you are getting the measurable heat. That's your potent heat or whatever you call specific heat, whatever. What does that do? It increases the temperature by 1 degree. ठीक है? So this is your temperature. So how all do we measure temperature? How all? We use a thermometer. Okay, so we use a thermometer for measuring the temperature. So when you talk of atmospheric temperature, what does the atmospheric temperature do? What is its role in atmosphere? Atmospheric temperature क्या करता है? One, it heats up the air. Second, because of that, it will cause that expansion contraction of air and rising and all. याद है?
So from that, in one place where it is too hot, the air tends to rise. Where it is too cold, it becomes denser and sinks. So there it is creating pressures. हमने बात किया था ना जब ट्रोपोपॉज में मिक्सिंग का बात कर रहे थे. So hotter regions, air tend to expand, rise because they are becoming lighter, so they rise, है ना? So they create these kind of things. So temperature variation creates movement in air by changing the density. ठीक है, और वो density change से वो pressure भी बनाता है. So one aspect I want you to write, the importance of atmospheric temperature. Importance of atmospheric temperature. One, importance of atmospheric temperature. One, it changes the pressure, hence causes air movement in atmosphere. Hence causes air movement in atmosphere. So this is one thing it does. Now temperature, what else does it do? Changes the pressure and hence cause air movement in the air. Alright. Second, it also affects how much moisture the air can hold. Okay? It also affects how much moisture the air can hold. Okay? For example, hotter air will hold more moisture or less moisture? Can hold and holds, दोनों में अंतर है ना? So one is about capacity. So here it affects the capacity of air to hold moisture. It does not affect the real amount. It only affects capacity. Capacity और real amount में अंतर है. Reality और capacity का अंतर क्या होता है? पता है? Reality और capacity का अंतर जो आपके अंदर है और जो आप बन सकते हो, है ना? IAS बन जाओगे? पता नहीं. बन सकते हो? सबके सब. यही अंतर है. ठीक है, तो रियलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर होता है? कैपेसिटी सेज इट इज पॉसिबल, रियलिटी इट इज देयर. सो टेम्परेचर अफेक्ट्स ओनली द कैपेसिटी ऑफ एयर. इट डज नॉट इंक्रीज द मॉइस्चर इन एयर, इट ओनली इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ एयर. ठीक है, हाउ? हॉटर एयर कैन होल्ड more moisture. अगर इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा है and I throw 5 buckets of water, all of that will evaporate. But if the room temperature is less, very cold, and if I throw 1 bucket of water, will it evaporate? No. That means lower temperature has lesser capacity to hold. So वो capacity लिखना है और capacity word को 5 बार underline करना है ताकि वो clear है, यहाँ doubt नहीं होना चाहिए, right? So the temperature affects the capacity of air. Temperature affects the capacity of air to hold moisture. Affects the capacity of air to hold moisture. Capacity of air to hold moisture. Higher temperature means higher capacity to hold moisture. वो लिखना है. Higher temperature means higher capacity to hold moisture, and lower temperature means lower capacity. ठीक है? And then you have to clarify one more thing. Higher capacity does not mean that the air will always have higher moisture. Capacity का मतलब higher होना जरूरी नहीं है. ठीक है? Higher capacity does not mean, right? So you can write higher capacity does not mean that the air will in reality also have more moisture. Higher capacity does not mean that air will in reality also have more moisture. In reality also has more moisture, because that depends on, अगर मैं बाल्टी पानी फेंकूंगा ही नहीं तो टेम्परेचर कितना भी हो. So that depends on availability of water. ठीक है? That depends on availability of moisture. ठीक है? अगर available है then it will evaporate. Okay? Availability. That depends on availability of water. Now just imagine, I'll give you two situations, you have to imagine. Let us say over the ocean temperature is 35 degrees and over the desert temperature is 35 degrees. In both the cases, what is the capacity of the air? Same. Which air will have more moisture?
ocean, and desert one will still not have. Why? पानी है ही नहीं, capacity कितना भी हो. Do we get it? So this is what it means. Clear? Very good. So then once we understand this, the next thing is, so this is how the temperature affects. Next is which factors affect temperature. What we learned, how temperature affects. Next is factors affecting temperature. Which factors affect temperature in different regions? So factors affecting temperature. Factors affecting temperature. So which factors do you think will affect temperature on the earth? सबसे basic जो आपने अभी तक पढ़ा है, थोड़ा idea है. One, you can say latitude, everyone agrees. At the, when you come closer to the equator tropic, hotter temperature. As you go toward the pole, lower temperature. So should I say, please see here and tell me, should I say, if this is the graph, and please don't draw exactly the whole graph, just make the outline, but don't draw what I'll be drawing on this. If I say this is, let us say 0 degree, that is equator, and this is tropic, and this is pole, should I say temperature will decrease like this? Should the temperature decrease like this? Yes or no? As you go from equator to pole, should the temperature decrease like this? Yes or no? No sir, yes sir, दोनों आंसर आ रहे हैं मुझे. The yes ones, please give me how. Yes, no के पास भी, अच्छा no से पहले पूछ लें. हाँ, no one, आप बताओ. First it will increase, then it will. Why? Because tropics have more clarity. आज से हमने 2-3 बार पढ़ा है. It has less clouds and equator have. कुछ लिखा था ऐसा? आज लिखा है. So अगर cloud ज्यादा है तो temperature कम होगा. ठीक है? So the graph is not like this. The graph is, it will increase from equator to tropic, and from tropic it will decrease. So this is the temperature graph. Okay, equator has warm temperature but not the warmest temperature, right? Why, you will understand gradually. Okay, we'll do that, but just draw this. So this is the temperature graph, right? From equator to tropic temperature, the ones who want to write can write. Equator to tropic temperature increases, and tropic to pole temperature decreases. Is that okay? ठीक है? Temperature decreases. Then, so this is one, what you call as latitude. Then after latitude, which is the second factor? Altitude also. आपको बुक का ही सीक्वेंस में चलो, that is good. All of this is given in GC Leong, है ना? The factors affecting temperature. Have I asked you to read those chapters 13 and 14? तो I think chapter number 13 में दिया हुआ है या 14 में, हाँ किसी एक में दिया है. Okay, so factors affecting temperature. We have to go almost in that same sequence. ठीक है? So altitude. How does the altitude affect the temperature? Normal lapse rate. Simple. एक लाइन लिखना है. ठीक है? So it is affected by normal lapse rate on an average. So on an average, it affects by normal lapse rate. What is the rate? You know, for every 165 meter height, temperature decreases by 1 degree, right? That is normal. Okay, so normal lapse rate. But then we have to write further in this. But summer or daytime, and winter or night time. Summer or daytime and winter or night time, this does not remain the same. Okay, it doesn't work at normal lapse rate, right? So first understand, then I'll dictate. What happens? Please see, all of you. During the summer time, the ground temperature will be hotter than average or colder than average?
normal lapse rate is for average. Supposing that summer winter सबका average ले लिया, but in summer what will happen? Ground will be hotter than average and upper atmosphere might have the same temperature, क्योंकि वहां पे तो summer winter का effect नहीं होता है. So as you go in the summer from surface to up, temperature will fall faster or slower because it has to cool fast. ठीक है? So in summers and similarly during daytime, summer मतलब 6 months and daytime मतलब 12 hours. In both these duration, the temperature falls faster. Okay. Whereas in the winters 6 months or night time 12 hours, what will happen? There is no sun. So surface is also relatively cooler than the average. So what will happen? नीचे भी low है, ऊपर भी low है. So rate of change is less. ठीक है? So in winters and night time, lapse rate will be less. The practical lapse rate. ठीक है? Whereas in summers or daytime, practically observed lapse rate will be higher. Clear? So should we write this? लिख लें? Right. So where you have written summer or daytime, write down the practically observed lapse rate. Practically observed lapse rate will be higher. Practically observed lapse rate will be higher because surface temperatures are higher than average. Earth surface temperature. Because Earth surface temperature are higher than average. Higher than average. And in front of that, winter or night time, where you written winter or night time, वहाँ लिखिए winter or night time. The practically observed lapse rate is less. These are all prelims questions. ठीक है? So practically observed lapse rate is less because even the surface temperature is less than average. Even the surface temperature is less than average. Hence rate of change will be less. Rate of change will be less. Now there is one fact that is hidden in this statement. What is that? That the upper atmosphere temperature does not change with day, night, summer or winter. है ना? Then only this is possible. If the upper atmosphere temperature is also changing, then this would not apply. Right? So this is the factual statement here, which is hidden in all these statements. What is that? The upper atmosphere temperature round the year remains, 24,365. Upper atmosphere temperature 24,365 remains nearly constant. Not affected by summer, winter, day, night, all that. Okay, upper atmosphere temperature remains near constant round the year. Remains constant round the year and round the day. Okay, good. Then ये भी प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं. Does the upper atmosphere temperature change with summer, winter and all this? वैसा नहीं होता है. It doesn't change much. Okay, good. Now come to the third one. Continentality effect. So the third and fourth, we do both the factors together. Continentality and maritime effect. Maritime means ocean. So we call it as continentality and ocean effect. Okay? So let us try to understand this continentality and maritime effect. How does continents and oceans affect the temperature? Alright. So just to make you understand this and to help you remember it for longer period, I cannot say ever, but at least for longer period, I'll draw a diagram with something and maybe आपको बनाना, I don't think ये necessary है बनाना, just to help you understand, it will be okay.
So let us say and you can see there is a water body and this is land. ठीक है. अच्छा वो हंस रहे कि सर बैलेंस कैसे बनाएगा ये. कोई बात नहीं, डंडा भी दे देते हैं, ये लो. ठीक है, ऐसा बैलेंस बना के खड़ा है. Now I'll give you different situations and you have to give me what do you think you will feel because the answers lie with you. If you are standing like this on a hot summer day, what will your leg number 1 and 2 feel? So hot summer day. वन एंड टू सारा सिचुएशन सामने है. बताओ वन को क्या फील होगा? हॉट. सो लेग नंबर 1 विल फील हॉट विच मीन्स लैंड वाला विल फील हॉटर एंड द वाटर बॉडी वाला विल फील कोल्डर. कोल्डर एंड ऑब्वियसली दिस इज कंपैरिजन. आपका बॉडी हमेशा कंपैरिजन ही कर रहा होता है ना. Suppose you drink a normal glass of water, after that you drink tea, so you feel it warmer, and you drink cold shake, you will feel colder. तो comparison ही है ना हमेशा. Okay, very good. Now the opposite of this. Let us say I take you to the opposite condition, and I put you in a winter, cold winter night, right, middle of the night, something like 3 o'clock early in the morning. And I ask you to do the same thing. सबसे पहले बोलोगे सर नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो. But let us say forcefully ले गया मैं आपको उधर खड़ा कर दिया ऐसा. अभी बताओ, what will your legs feel? One will feel colder, everyone agrees, and because of that, 2 will feel relatively warmer. ठीक है? So water in the summer season. Now please see how is it behaving. Water in the summer season and water in the winter season. Can you see this difference? How is the water behaving in the summer season? Colder. And how is the water behaving in the winter season? Warmer. And how is the land behaving? Land. Hotter in summer and colder in winter. So which one will change its temperature fast? क्या लगता है? Which one will change its temperature fast? Land will change the temperature fast, whereas water will not change its temperature too fast. है ना? Because of that, even in the summer it will remain relatively cooler, and in the winter it will remain relatively warmer. Why? It's not getting cold or warm. It will not change its temperature. So it will change its temperature slow. This is the characteristic of water. And why does it change its temperature slow despite of getting same heat? Because it requires more heat to change its temperature. उसका latent heat requirement ज़्यादा है. ठीक है? So water needs more heat to change its temperature as compared to land bodies. ठीक है? So is this understood? So there are 2-3 things that you need to write. First you have to understand and write this, and the second you have to write the characteristic of land and water. So first let us write the characteristic of land and water, then we'll write this. Should we? So सबसे पहले क्या लिखेंगे? That as we understand, as we already know, this is something that you gave me the answers in, as we already know that water body or water requires more heat exchange, addition or subtraction. ठीक है? More heat exchange for changing its temperature as compared to land bodies. Full stop. This simply means that if land and water both get, this simply means that if land and water both get, land and water body,
water body will be a better word. Land and water body both get same amount of heat. Same amount of heat. Get means receive. Okay. Get same amount of heat. Then the land will be hotter or cooler? Land will be hotter. Land will be hotter. Whereas the water body might still be cooler. Water body might still be cooler. Okay. Good enough. Hence, therefore, in summer season, within bracket or daytime. Summer season matlab 6 months and daytime means 12 hours. We always are talking this way. Okay. So whenever I say summer, what happens in summer and winter? In a short period, it will happen between day and night. Okay. So the way summer will behave, that way daytime will behave, and the way winters will behave over a 6-month period, same ways night time will behave in 12-hour time. Is that okay? So hence during summer or daytime, the land becomes warmer. Land becomes warmer, whereas water bodies remain cooler. Water bodies remain cooler. And on the other hand, during winter, within bracket night time, during winter, within bracket night time, by releasing same amount of heat, yet the land will become what? More cooler. Very good. Will become more cooler. Whereas the water body might still remain. Land will become more cooler, whereas the water body might still remain relatively warmer. ठीक है, relatively warmer. This characteristic of the continent is known as continentality effect. This characteristic of the continent is known as continentality effect. And of the ocean bodies, this characteristics of the continent is known as continentality effect, and of the ocean bodies is known as maritime effect. Of the ocean bodies is known as maritime effect. ठीक है? So which one is a severing effect and which one is a moderating effect? Continentality is a severing effect. Severing तो हम समझते हैं ना, किसी चीज को और extreme कर देना. Something made more extreme. So in the summer, continent makes it more hotter, and in the winter, continent makes it more cooler. So this is a severing. So if you want, you can write this. Hence, continentality is a severing effect. S-E-V-E-R-I-N-G. Continentality is a severing effect. S-E-V-E-R-I-N-G. Whereas maritime is a moderating effect. Maritime effect is a moderating effect. Alright. So understood this. Next. So 4 things done. Now 5th one. The 5th factor is ocean currents. Ocean currents. ठीक है? Ocean currents. Come again? नहीं, वो 3 and 4 दोनों ऊपर किया है ना?
तो ये 5 हो गया, ठीक है. So I just clubbed them together for covering. All right. So ocean currents. So what do we mean by ocean current? You have to draw this with me. ठीक है. Suppose this is the equator, and obviously this is the pole, and I'm drawing a continent for the sake of making all of you understand with a simple example. This is South America, the continent. I am giving you a real practical example. ठीक है. So that's how you get. मतलब थोड़ा मोड़ा लग रहा होगा, चला लेंगे. देखो अफ्रीका और साउथ अमेरिका ना थोड़ा चलाना पड़ता है, ठीक है, तो इतना चलाना पड़ेगा. ऑलराइट. सो दिस इज साउथ अमेरिका, एंड इन साउथ अमेरिका दिस इज द पोलर रीजन. ऑब्वियसली एवरीवन नोज साउथ पार्ट, एंड दैट इज इक्वेटोरियल रीजन. So when you go to the South American coast, right, in the South American coast, on its western coast, there is a cold ocean current, whereas on its eastern coast, there is a warm ocean current, like this. ठीक है, ऐसा बनाना है, बना लो. आप वेट कर रहे थे अभी तक या एंजॉय कर रहे थे? यार क्लास में एंजॉयमेंट मोड में नहीं जाना है ज्यादा, मतलब करना है, पढ़ना, एंजॉय करना चाहिए. डन. All right. Drawn this much, then I'll make you understand what it is. Most of you have seen ocean waves, मतलब at least in movies or whatever. Real life में हो सकता है ना देखा हो, but ocean waves तो देखा होगा, या water waves. So they just come and hit the coast, right? Now that is one type of movement that is happening in the ocean water, but there is a much bigger movement also happening in the ocean water. ठीक है? What is that big movement in the ocean water? This big movement in the ocean is known as current. That happens on the ocean surface. ठीक है? What are these current? तो ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है. दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट. ओके, दिस इज अ स्लो लॉन्ग टर्म यूनिडायरेक्शनल लार्ज वॉल्यूम मूवमेंट ऑफ वाटर. क्या क्या है? स्लो. स्लो मतलब इट इज मूविंग वेरी स्लो. इट माइट बी मूविंग एट अ फ्यू किलोमीटर्स पर आवर, राइट, 5-10 किलोमीटर. सो वन इज स्लो. सेकेंड इज लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब राउंड द ईयर इट विल कीप मूविंग लाइक दैट. Waves don't move round the year, but they will move round the year. So slow, long term, matlab pura year. Third, large volume, right? So large volume means how wide might this be? Wave is just 1 or 2 or 5 meters. This can be 100 kilometer wide or 200 kilometer wide. So on the whole ocean surface, this might have a width of around 200 kilometers. So the surface water of the ocean are nearly 200 kilometer wide, and maybe 300-400 meter deep. 300-400 meter deep and 200 kilometers wide. That whole water might be moving in a fixed direction and slow, right? So fixed direction, slow, round the year. This movement we call as ocean currents. So if you are 100 ships on that current, all of you will go in that same direction because of that current. ठीक है? And you will not realize amongst yourself that there is a current below you. But if I take a satellite image and video and I show it for a year, then you will see, हाँ वो सब कुछ उधर ही जा रहा था. So it's a very imperceptible kind of movement. मतलब आपको दिखेगा नहीं. Why? Because then you have to, shoot it from a very long distance. Because you are shooting something as wide as 200 kilometer wide or 100 kilometer wide. So this is how the ocean currents move. Is that all right? So now let us write this down. First we write what are ocean currents. Ocean currents are large volume
large volume within bracket up to 400 meters deep, up to 400 meters deep, and 100 to 200 kilometer wide. 100 to 200 kilometer wide. This thing, this width, right? Width, bracket close. So large volume, slow moving, unidirectional, same direction, nearly round the year, and long distance. How long? Thousands of kilometers, right? Long distance within bracket, thousands of kilometers, bracket close. Movement of ocean water, ठीक है? Now, as you can see in this diagram, if I ask you current number 1, where is it coming from? Which region to which region? And current number 2. So current number 1 is moving from polar to equator. So what type of water will it bring with it? And that cold water will do what to the tropical or equatorial region? Make that coastal region. If you bring polar water to that region, what will it do to that region? It will make that tropical equatorial region cold. So this one current we call it as cold current. Why? Because it will make the tropical equatorial region cold. Cold water लाया पोल से और वहां ले जाके, so it will make that region cold. Is that okay? Whereas current number 2, from where is it taking the water? And where up to where? So what will it do to the polar region? So this becomes the warm current. And it will make the polar region warmer, and this region is colder. As one, this is what ocean currents do to temperature. And are they changing the temperature of a small region? कितने बड़े region का temperature change करेंगे? Maybe a few 100 kilometer wide region, right? So not 100, a few 100 kilometer wide, because they are thousands of kilometers long. Okay, so they will affect the temperature of a very big region. Is that okay? आगे समझ में? So do we understand what are cold currents? पक्का? Very good. So after cold current and warm current, so this is how the current affect the temperature, right? Cold currents will make the region colder, warm currents will make the region warmer. ठीक है? And how do you name the current? On the basis of from where they are coming. वो कहाँ से आ रहे हैं उसका बेस पे. And I say normally that it's the same way as we behave with people. If someone is coming from north, we say he is from, है ना, कोई east से आया है तो east, south से आया है तो south, है ना, ऐसा बोलते हैं ना. Currents are also named same ways. ऐसा याद रखना है. If you get confused, कैसे याद रखेंगे? सर ने क्या बोला था? जहां से आदमी आया है वैसा बोलते हैं उसको, है ना. जैसे कोई साउथ से आया तो क्या बोलते हैं? साउथ इंडियन. नॉर्थ से आया तो नॉर्थ इंडियन. तो वैसा ही करंट को ही बोलते हैं. नॉर्थ से आया तो कौन सा इधर से आया, देन बट देयर यू विल नॉट से नॉर्थ और साउथ, यू विल से कोल्ड और वार्म डिपेंडिंग ऑन विच रीजन इट इज कमिंग फ्रॉम. इज दैट ओके? ठीक है, वेरी गुड. So this is your current thing. Now there are few more things left, but we won't touch them right now because that will take time. So I'll leave you right now. ठीक है? And hopefully this much we have understood. थोड़ा अभी घर जाके पढ़ना भी है. ठीक है? और जितनी बाकी बातें मैं करता हूं उन सबको भी थोड़ा ध्यान में रखो. वो आप ही का बेनिफिट के लिए है. ठीक है? That will help you in creating better answers. Because my purpose is बहुत ही क्लियर है. आपका प्रिपरेशन की तरफ स्टेप्स बढ़ते रहना चाहिए, सो दैट बाय द टाइम यू फेस योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, व्हेन यू फेस इट यू शुड बी बेस्ट प्रिपेयर्ड. यहां जितना गलती करना है यहां करो ताकि वहां गलती ना हो. ठीक है? ऑलराइट, दैट्स इट. सो गुड इनफ. यस, ये बोलो.
Online people, just give me a second. Sir, I don't see these online people response. Is there anything you want me to take up? Everything is fine, perfectly fine. So online people also, thank you. Yes, yeah, bolo. Which we'll do in oceans. Okay, factors affecting current we'll do in ocean. Good enough. So that's it. Thank you.